Good evening to you all faculty members, research person, and industrialist. A very warm welcome to this session of AICD sponsored Atal Online FDP training program. We are incredibly fortunate to have with us today Mr. Niladri Bihari Mahanti sir as Joint Director IT and Scientist at the National Informatics Center NIC, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. With over 19 years of experience in the IT domain, his core area of expertise includes cybersecurity and artificial intelligence, with additional interest in emerging software ecosystems such as quantum computing. He holds BTech in Computer Science and MBA in Information System. Mr. Mahanti has been honored with multiple national level gold and silver awards for his exemplary contribution to the field of ICT. He is the chief architect of the Sathi project, developed in collaboration with the Department of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India. The Sathi platform is currently operational across 27 states in India. His specialization also includes the integration of AI tools and technology in cybersecurity. Heartily welcome, sir. Please carry on with the session. With your slide Just to presentation. take issue, just give me 2 minutes. Thank you, sir. All participants, please join. If any friend circle is there, inform him. Sir is available now. In 6:10, he will be starting the session. Okay, let me share my screen. Is it visible? Yes, visible, sir. Yeah. Right. In case we will have any doubt, we can. I will give break time to time so that those doubts can be clarified. So, first of all, today's topic is the space take and the use of AI in cloud. Space is what we understood is that is very highly technology involvement is there, and very complex topic. And traditionally, conventionally, we say that this is not rocket science. Means this is rocket science is very complex. It involves a lot of advanced technology, a lot of mathematics, and very complex basically. And we normally say this is not our cup of tea because it needs a lot of capex investment. We have to get access to a high profile advanced laboratories. Then only we can do something. We can do some kind of experiments. But in couple of years before, in 2021, just before the Corona and COVID struck the entire humanity, something happened. That is, the defense and the space sector got open to the private company.
Prior to that, these two sectors were not open to the private companies. These are only allowed to the government sector organizations to get involved. So when it is coming to the private companies, so many small to large startups has grown up. They try to develop something technology, some technologies. They need a lot of manpower. They need a lot of knowledge. Why? How this is happening? Because the government provided some few platforms, just like New Space India Private Limited, Antariksh. They have given us a platform that the scientists of ISRO, they will give consultancy, KT, knowledge transfer to the private startups. And their resources like ground stations, like labs, will be available on rental basis. Just like हम एक banquet or we can book a banquet hall for marriage, we can also book the ground station for 2 hours, the launch pad for 1 day. That kind of rental service got activated. Government started spending thousands of crores of funds for the state startups. Right now, whenever we are the computer science guys, we thought that this is the cup of tea of the aeronautical engineers. But what happened? Computer science is just like a potato. It can get mingled in any topic. So similarly, in the space industry, also, there is an involvement of computer science, AI, IoT, and other cloud computing technologies involvement also. So in the current scenario, in the current topic, I will discuss about what are the scopes and opportunity which can be exploited by the computer science engineers, professors, students, and all the faculty members, so that their research can be aligned nationally with the interest of these new space startups. Because it is not ISRO that need the research outcome from you people. It is the small scale startups. They think the problem in a different way. They understand the problem. They want to solve the problems. But from the academic point of view, the research also need to align with their problem. So we will understand what are the scopes and opportunities where sitting at your home also, using simulators, using some algorithms, how can your research help these startups, this space development and advancement in the space technologies. So before that, I like to tell about myself. So to understand how this space technology works, because coming and speaking something in front of you, before that, I need to make my hand dirty. So a few years before, what we have done with my team, we started developing a small satellite circuit and booked a slot in the European Space Agency rocket, so that whenever their rocket will go and deploy their satellites, our small satellite also they will do one launch. So from that we will try to understand how the satellite do communication before it goes, how the navigation happens, and what is the process of getting the satellite identification number from the international body. And that nitty-gritty, at least the cross section of the entire complexity we are able to understand, and that I will share with you. This is the certificate for getting the satellite ID and getting the slot booking for the launching. What I can understand here is the entire space ecosystem can be divided into three segments, three verticals. One vertical is called the launch vehicle related tools and technologies. Whenever we say launch vehicle, it looks something different. No, it is not the different, but it is same what we are talking about the rocket. In rocket, exactly what we see in the TV, that is not the rocket, that is a launch vehicle. The rocket is part of that entire ecosystem. What is the rocket, we will see in the after slide, few slides after this slide. So launch vehicle is that
body inside which the satellites or any payload goes. The second component is the payload. Payload in simple term, it is a satellite or any device that is going to be in the orbit. The third component is the connectivity. When the payload goes, when the launch vehicle goes, how it communicates with the so when we are how can we communicate with the launch vehicle, and how the satellite which is deployed in the orbit or any payload deployed in the orbit, how it will communicate to the Earth and the ground stations. You see, there is a normal radio frequency, it will come directly to our ground stations. This is not true, because the satellite that we launch or the any CubeSats or any SpySat, this is 48 kilometer per second or 32 kilometer per second. So this kind of tremendous velocity, so how it will communicate to a antenna and how it will receive it, it is having its own complexity. And all these three verticals are having its own allied technologies, method approaches, and its own complex systems. But all these things generate tons of data, and those data comes in the category of big data. And when there is a lot of big data, there is a possibility of applying AI algorithms on top of this. In fact, the traditionally the genetic algorithm, genetic programming, and colon optimization, swarm optimizations who are being utilized by all these space agencies right now looking at an opportunity for deep learning to play in this area. So the launch vehicle in this topic, before we jump into the computer, how the computer program, the AI, the cloud computing can help in all these verticals, we need to understand little bit about this rocketry ecosystem. If we know little bit about the rocketry ecosystems, the terms and terminologies being used, then only you can understand what are the thrust area and how we can work on the AI models to help improvement and advancement in these verticals. We are having solid, we need to understand what is called solid fuel and liquid fuel, cross vector control, attitude control system, LV means launch vehicle to dispenser interface, what is called flight computer, propulsion system, simulation, trajectory maintenance module. Then in payload verticals, we are having dispenser, FlightSat, regular satellite versus CubeSat, causing of losing and orbit, sensor actuators involved, onboard computers, power systems, thruster, and graveyard orbit. What are these things? Then connectivity related things are also there, how we will communicate with the device. Just look at the this diagram. In this diagram, this entire things we call is a rocket in a layman language, but this is actually launch vehicle. So in the left side, that white color, that is called SRB, that is called solid rocket booster, and that is called the solid propellant. You see, I have given a small example here. One is called solid fuel and the right side is the liquid fuel. Solid fuel is the matchstick and the liquid fuel is the lantern. What happens with the matchstick? The normally आग लगाया फंस करके जल जाता है वो. You don't have the control over this. Once आपने आग लगा दिया तो मैचेस ऐसा जलेगा जैसे वो अपने मर्जी से चलता है. वैसे ही these solid rocket boosters, they are the solid propellants. They are having the solid propellants. They are solid fuel. एक बार लगेगा तो वो बहुत तेजी से जलेगा. It generates lots of energy and इक्विपमेंट को, व्हीकल को एक जगह से लेके बहुत हाई अल्टीट्यूड तक जाके उसको ड्रॉप करते हैं. लेकिन इसका जो मिडिल में है, दैट इज यू सी, दैट इज कॉल्ड लिक्विड ऑक्सीजन एंड अल्कोहल वाटर मिक्सचर्स. सो ये होता है लिक्विड फ्यूल और लिक्विड प्रोपेलेंट. सो लिक्विड फ्यूल में क्या होता है, जस्ट लाइक द लैंटर्न, वी आर हैविंग द कंट्रोल कि वो कम जला सकता हूँ, ज्यादा जला सकता हूँ. सो लिक्विड फ्यूल इज मच मोर कंट्रोलेबल देन एनी सॉलिड फ्यूल.
So I hope you can understand why at the beginning of the rocket, the launch vehicle, there is a solid rocket booster जो टीवी में दिखाता है 10, 9, 8, 7 करके काउंट करता है और ऊपर से उठ जाता है. This is the difference between a solid fuel and the liquid fuel. बहुत दूर जाने के बाद में then liquid fuel एक्टिवेट होता है ताकि लॉन्च व्हीकल को प्रॉपर ट्रैजेक्टरी में मेंटेन किया जा सके. यू कैन सी दिस, जो इतना आग निकलने वाला जगह है वो है सॉलिड फ्यूल, जिसमें हाई एनर्जी होता है लेकिन अनकंट्रोलेबल होता है. और बीच में जो टंकी जैसा है दैट इज द लिक्विड फ्यूल, जिसमें जलने का फ्यूल और जलने में हेल्प करने वाला ऑक्सीजन दोनों ही एक साथ में जाता है, क्योंकि आउटर स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन साथ में जाता है. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लॉन्च व्हीकल एंड ए मिसाइल. मिसाइल जो होता है वो एनवायरमेंट के अंदर रहता है, इसके वजह से उसको ऑक्सीजन एनवायरमेंट में मिल जाता है मोस्ट ऑफ द मिसाइल. लेकिन इस केस में क्योंकि ये बाहर चला जाता है, एनवायरमेंट से बाहर जाता है, तो इसके लिए इसके पास में ऑक्सीजन उसको लेके जाना पड़ता है. So I hope this is understandable what I am saying. Next point is that हम जब थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो नीचे में आग उगलने वाला जो उसका नोजल जैसा दिखता है, ये दूर से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वो वर्टिकल है, लेकिन वो एक्चुअली में हमेशा वर्टिकल नहीं रहता. इसके पास में कुछ मैकेनिकल सिस्टम है जिसके वजह से वो लेफ्ट, राइट और कुछ एंगल से वो घूम सकता है, इस तरीके से उसको घूम सकता है. और इसके वजह से जो टॉर्क पैदा होता है उसी से वो अपना व्हीकल का एंगल को डिसाइड कर सकता है, उसका डायरेक्शन को डिसाइड कर सकता है. आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और ये लेफ्ट को मुड़ेगा या राइट को मुड़ेगा, ये डिपेंड करता है कुछ सेंसर्स के रीडिंग्स डाटा के ऊपर में. तो यहाँ पे एक कंप्यूटर होता है, जिस कंप्यूटर का हम बोलते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर में, और इस कंप्यूटर को हम बोलते हैं फ्लाइट कंप्यूटर. ड्रोन में हम उस कंप्यूटर को बोलते हैं फ्लाइट कंट्रोलर. ड्रोन में क्या बोलते हैं उसको? फ्लाइट कंट्रोलर. और रॉकेट में वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है, लॉन्च व्हीकल में काफी एडवांस होता है, तो हम उसको बोलते हैं फ्लाइट कंप्यूटर. तो ये फ्लाइट कंप्यूटर क्या करता है, काफी सारा चीजों का रीडिंग लेता है और ऑन बोर्ड सिस्टम खुद ब खुद अपने आप में कंप्यूटेशन करता है, और ये डिसीजन लेता है कि ये जो नीचे थ्रस्टर है ये लेफ्ट को घूमेगा या राइट को घूमेगा, किस एंगल में कितना डायरेक्शन घूमेगा. बेस्ड ऑन दैट इसका ओरिएंटेशन डिफाइन होता है. आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन एडिशन टू दिस, अगर ये है टू मेक द डायरेक्शंस, this thruster has to move left or right, and how much it will move in which direction, that has to be decided by the flight computer software. Point to be noted, our job, our role is inside that flight computer software. Whatever the algorithms, what are the programs that are going to decide, they are defined or write, that is going to affect the flight computer software. So this flight computer software के पास में जो कैपेबिलिटी है, उससे ये लॉन्च व्हीकल को थोड़ा सा दिशा दे सकता है, लेकिन फिर भी इसके पास में इतना कैपेबिलिटी नहीं होता रैपिड मैन्यूवर कर पाए. मतलब बहुत जल्दी बहुत बड़ा डायरेक्शन को मूवमेंट करने के लिए इतना सफिशिएंट इसमें एंगल अवेलेबल नहीं होता है. इसके लिए अगर मैंने एक मिसाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के समय पे मैंने उसमें से कुछ स्लाइस काटा है, क्योंकि इतना फास्ट होता है एक ह्यूमन आई चीजों को कैप्चर नहीं कर पाता, इसलिए मैंने वीडियो से कुछ फ्रेम काटा है ताकि आप लोग देख पाए कि एक फ्लाइट कंट्रोलर कितना सारा चीजों को कंट्रोल करता है. फ्लाइट कंट्रोलर में जो प्रोग्राम है वो ये भी करता है कि अगर थ्रस्टर थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ा तो यहाँ पर भी थ्रस्टर होता है, थ्रस्टर राइट टॉप में भी होता है. इट इज नॉट लाइक दिस कि थ्रस्टर इज ऑलवेज इन द बॉटम, इट ऑल्सो अवेलेबल ऑन द टॉप. तो ये टॉप में जो रहता है ये चीज को भी इट गिव्स द डायरेक्शंस टू द लॉन्च व्हीकल्स, टू द मिसाइल्स और एनी काइनेटिक फ्लाइंग काइनेटिक ऑब्जेक्ट, इसको कंट्रोल करने के लिए
थ्रस्टर ऊपर में भी रहता है। दीज आर लिमिटेड थ्रस्टर्स, लेकिन अवेलेबल होता है शॉर्ट स्मॉल स्पैन के लिए अवेलेबल होता है। तो इन सारा चीजों को कंट्रोल करता है फ्लाइट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। So the use of AI for TVC enhancement. What is a TVC? ये नीचे का और ये साइड में जो थ्रस्टर है, उस थ्रस्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हो सकता है? एडेप्टिव कंट्रोल एल्गोरिथम्स, रॉकेट डायनेमिक्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, पेलोड स्टेटस, इससे ऑप्टिमाइज करता है टीवीसी को। मशीन लर्निंग कैन बी ट्रेन्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड सिमुलेशन डाटा टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, जिसमें ऑप्टिमल कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि मिसाइल और रॉकेट कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आप 50 बार एग्जीक्यूट करके उसमें से गलती निकाल के आप फिर से उसको रिवाइज कर पाओ। यू विल हैव वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर टेस्टिंग, रिवाइजिंग एंड टेस्टिंग, देन रिवाइज, देन टेस्ट। इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली बहुत बार कर पाए। तो इसलिए सिमुलेशन एनवायरमेंट में एआईएमएल का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर पूरा टेस्टिंग करने के बाद में ही जाके फिजिकल टेस्टिंग पॉसिबल हो सकता है। फॉल्ट डिटेक्शन एंड करेक्शन can process vast amount of data in real time using the onboard computer and detect the fault faster and take actions. तो जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम में कहीं पर फॉल्ट है क्या, फॉल्ट को डिटेक्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो भी इस सारा सेगमेंट ऑफ एल्गोरिथम्स यहाँ पर यूज हो सकता है। देन होता है ट्रैजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन। सोलर पैनल का स्टेटस क्या है? सोलर पैनल शुड बी टुवर्ड्स द सन फॉर मैक्सिमम एनर्जी क्रिएशन। बैटरी लेवल को देखना, पावर कंजप्शन को देखते हुए चीजों को ऑप्टिमाइज करके रखना कि अगर पावर कम हो गया, पावर बैटरी लेवल कम है, सोलर पैनल चार्ज करने लायक अभी नहीं है, तो अननेसेसरी इक्विपमेंट्स को बंद करके सिर्फ इमरजेंसी इक्विपमेंट को ऑन रखना। ये सब ऑटोमेशन हो, ऑटोमेटिक हो, किसी ह्यूमन का इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े, इसके लिए भी अलग अलग एल्गोरिथम्स है। नेविगेशन एंड टारगेटिंग, तो देन लर्निंग फ्रॉम ऑनबोर्ड सेंसर्स, द एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन एक्यूरेसी एंड गाइडेंस सिस्टम, ये सब चीज के लिए जरूरत होता है एआई एल्गोरिथम्स वगैरह का। डायनेमिक रेस्पॉन्स पाने के लिए पेलोड का हेल्थ, इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग्स, डाटा एक्विजिशन स्टेटस, ये सब चीज के लिए भी हम लोग देखेंगे क्या क्या कंप्यूटर साइंस में इसके लिए फैसिलिटीज वगैरह है। स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड सिमुलेशन ऑफ द लॉन्च व्हीकल, जब हम स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं तो हमको सिमुलेशन की जरूरत पड़ता है। तो एक टूल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज कॉल्ड ओपन रॉकेट। गो टू द ब्राउजर, search in the Google, you will find this open rocket tool which is free of cost, and this is the open source. Open source means the source code is freely available. You can download these, customize these, the documentation is these available here, and after customization you can develop your own sample rocket things. The different components you can just drag and drop, make your components. It is not like AutoCAD or any other CAD tool where you are making the 3D model only. No, it is not the 3D model. It understands which component that you are dragging and dropping is not compatible with another component which is already in place. The incompatibility, the issue as per the stability, the theory and the practical should match with each other. That is why all these mathematical things are being validated here when you are designing something, and the simulator is also inbuilt inside this. So this open rocket is available in the GitHub. The source is available in the GitHub, and any kind of new module algorithms to ensure that the optimized version of the design you are making, that algorithms also can be included inside this simulator. I will give just the name, some kind of direction, so that those who are interested, they can go to the site, download these, explore more after the discussion point is over. So in this, as it is the open source, in this there are many plugins which can be developed.
so that any persons using open rocket for designing and simulation purpose, they can develop, they can use your algorithms, your component or your optimizations algorithms inside this particular simulation tool and CAD designing tool. So what kind of algorithm we can develop? Which can analyze the structural simulations to predict potential failure points and weakness in the rocket design, learn from the simulation data, can generate synthetic data for simulation purpose also. You can develop AI tool, you can use AI tool to develop synthetic data for simulation purpose, can suggest possible enhancement in the current design. The design has been given. Now the AI can study this design based on certain learning. It can understand that what is the problem in this design and how it can be better enhanced. Can generate and innovate an efficient structural configuration leading to the discovery of the novel design. So now I am coming to this next part of the talk, that is the difference between the hardware and the software in the context of this space industry. Because whatever we are talking about, these are the hardware design and simulations. But all these things are controlled by the flight controller, which is a software. The problem with the software is, unlike hardware, the softwares don't follow the rule of redundancy. For example, I am having one watch. So similarly, I am having 3 watch, for example, 3 watch. And if I'm dropping this 3 watch from a height, then there is a possibility that any one of the watch may be broken. Not necessarily all the 3 watch will be broken. But in case of software, if in certain conditions the software fails, in the same conditions, all the software will fail of the same copy of the software. मतलब एक सॉफ्टवेयर का मैंने 3 कॉपी बना लिया, अगर एक कंडीशन में ये कॉपी फेल हुआ तो वो बाकी का 2 कॉपी सेम कंडीशन में फेल ही होंगे. तो रिडंडेंसी का रूल ये फॉलो नहीं करता. जैसे कि मेरे पास में कप है, मैं कप को नीचे फेंक दूंगा तो गारंटी नहीं है कप टूटेगा, लेकिन सेम कप अगर मैं दूसरा फेंकूंगा हो सकता है वो टूट जाए. तो हार्डवेयर के केस में क्या होता है कि अगर मैं 2, 3 या 4 ऐसा रिडंडेंट चीजें रखूं और उसको यूज करूं, अगर एक खराब हो गया तो दूसरा खराब होगा बोल के उसका कोई गारंटी नहीं है, या खराब नहीं होगा बोल के गारंटी नहीं है. लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में क्या होता है, अगर सेम सॉफ्टवेयर का मैंने 3 कॉपी बनाया, सेम सिनेरियो में तीनों का तीनों फेल होंगे. इसीलिए सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग ऑन ग्राउंड बहुत रिग्रेसली होना पड़ता है, क्योंकि ऑन द स्पेस वो हमेशा यूनिफॉर्म बिहेव करेगा, अनलाइक हार्डवेयर. हार्डवेयर के केस में क्या होता है, बैकअप रहता है. एक हार्डवेयर खराब हो गया तो दूसरा हार्डवेयर उसके साथ में रहता है ताकि ऊपर जाने के बाद में हमको कोई तकलीफ ना हो. लेकिन सॉफ्टवेयर अगर हम 2-3 भी बैकअप दे दे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेम लॉजिक में सारा फेल हो. दिस इज द प्रॉब्लम विद द सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर में एक और प्रॉब्लम भी है जो हार्डवेयर का अंडरलाइन प्रॉब्लम से ही जनरेट होता है. You know about the bit flip operations? Bit flip means here in Earth, if 3 plus 2 is equal to 5, we understand that in Saturn, in Watson, everywhere 3 plus 2 will become 5. But no, it does not work like that in the case of space. In Belgium on election day, people voted. Votes are captured in the EVM machine. But when counted, the vote and the VVPAT machines, those data were not matching. The answer was minus 4096, which was not possible at all mathematically. So when they found that the record was 4610, but unfortunately one of the bit in the binary representation of the 4610 got flipped. It became 0 from 1, resulting the entire value become 514 instead of 4610. But how it possible? How the one bit
of a binary representation of a number can so easily got flipped, and the another number is get represented in this manner. So these operations are called bit flip, and this happens because of the radiation. This radiation is normal in the space, but why happened in Belgium? Because of a recent, at that point of time, a recent uranium mining nearby to those areas that created some kind of radiations which impacted the computer circuit of that particular area. So this bit flip in technical world, in the engineering terminology, is called single event offset. That is called SEU, single event offset. You can say bit flip. हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में हम उसको बिट फ्लिप बोलते हैं, लेकिन थोड़ा साइंटिस्ट लोग उसको बड़ा बड़ा टर्म और हेवी टर्म में बोलने के लिए उसको बोलते हैं SEU, सिंगल इवेंट ऑफसेट. अगर आप गूगल में, प्रिंजर में, IEEE में सिंगल इवेंट ऑफसेट मार के सर्च करेंगे, you will find a lot of research journals, papers where you can go and study how AI/ML can help in the space industry, can help to predict that bit flip is going to happen, identify the bit flip operation, and rectify the corrupt data done by the bit flip operations. So the Van Allen radiation belt just above the Earth's surface, they are having heavy magnetic impact or radiations on the avionics of the launch vehicles or the satellites or any payload inside the launch vehicle. So when they go from a range of 5,000 kilometers to 20,000 kilometers, they face this Van Allen radiation belt. This is a highly magnetic zone having a lot of radiation which affect the electronic circuits and the bit and binary part of the data, which can just make our entire computer program random and unpredictable. If any of the bit convert from 1 to 0 and 0 to 1, the meaning of the program can get completely destroyed, damaged, and completely misguided. So to protect that, there is a lot of process like anti-radiation casing, expensive, to protect every equipment from radiation. So there are very software way of dealing with bit flip or the SEU. So use of error correcting codes and schemes, built-in redundancy. You know, in the SpaceX, they use multiple CPU to do the calculations, and finally, when the result comes, they do voting. For example, 3 plus 2, 5. One computer says, second computer says 3 plus 2, 5. Third computer says 3 plus 2, 5. Fourth computer says 3 plus 2, 9. For example. So they do the voting and they found that 3 plus 2, 5 is the common answer, majority of the answer. So I will take it like 3 plus 2 is equal to 5. So because the bit flip happens in such a scenario that any one of the computer get problem, not all the computer will get the problem. So this is the assumption. Based on that assumption, the SpaceX work in that manner. So there are many articles, journals, research paper that you can find in the Springer or IEEE journals, where you can find how the KNN, how the DNN helps, or you can develop some applications. Application means ekdam ASIC applications using FPGA also you can develop to prove that your algorithms or your AI programs, your models can actually predict that within next few minutes bit flips may happen in any of my computers. So I will be getting
very precautionary. I will take very precautionary measures for that. So these are the papers that you can have a look on. Another point is that when you are writing program at a very constrained environment, restricted environment, our codings are to be also very optimized coding. For example, if I will ask somebody that I have the thermometer, it is a digital thermometer, so I will put the thermometer and the reading of the thermometer will be stored in my database, SQL Server database. So I have the temperature of 101 degree temperature, I have some fever. So I want to store the data, the temperature in the database. So everybody in the current industry, they will store the data like 101 as an integer number in the SQL Server. But a coder who write code for the drones, UAVs, submarines, defense equipments, space equipments, they don't do code like that. Our coding mechanisms are different than the way we deal with the mobile applications and the web applications. So if our body temperature, normal temperature is 98 degree, so 101 minus 98 is equal to 3 degree. So instead of storing 101 in the database, I will prefer to store 3 in the database. And whenever there is a requirement of showing or using that particular temperature, I will add 98 instead of storing that 98 in my database. And how much bit it will take? If I'm storing 101, then it is taking the 8-bit register to store the data. But if I am minus 98, that means I am using only 2-bit registers to store the data, and the calculations will be much more faster. The storage capacity will be much more cheaper, and in this manner I can deal. There are multiple ways of optimized coding in the resource constrained environment. This is one of the examples that I've given. I know at least 20 such examples where coder need to be very specially equipped with the knowledge so that they can save some storage, computation, speed of the computations, which is not very common in web development and mobile application development. Similarly, just for example, one sensor is there, it is having a error margin of, for example, 4 or 3, error margin of 3. So instead of sending 35, or I can divide the 35 into 2, and I can say 17.5. So 17.5 convert to integer is 17. So instead of 35, I can store data as 17. I can send the data into 17 to the opposite party, opposite component, and there I can do the multiplication. So there are multiple ways through which we can do data optimization using various techniques, and this is one of them. So before we will write program, we need to understand what are the different way of writing optimized code for storing the data, computing the data. So now I'm coming to this is the infra part that I have told. I have told you this particular vertical, left vertical. I'm coming to the satellite part, the payload part. When this launch vehicle goes and phase by phase it drops, finally it drops the satellite in the orbit. When the satellite drops in the orbit, traditionally, conventionally, we have seen that पूरा बड़ा घर के जैसा सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर रहा था. उसको देखते ही लग रहा था कि ये बहुत बड़ा चीज है. ऐसा जिंदगी में तो कभी हो ही नहीं सकता कि इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में बैठा हुआ कोई रमेश या सुरेश अपने जिंदगी में कभी कोई सैटेलाइट बना के, कभी रॉकेट में लगा के, कभी ऑर्बिट में छोड़ सकता है. ये तो हो ही नहीं सकता. आज हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ ख्याली पुलाव है, और हम कभी प्रैक्टिकली कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो इसरो में है नहीं, हम तो कोई कॉलेज में बैठे हैं, तो हो ही नहीं सकता. ये दिमाग में आए. लेकिन एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है क्यूबसैट. क्यूबसैट शुरू होता है
3U 1U यूनिट से। U का मतलब होता है 1 यूनिट ऑफ इज इक्वल टू 10 cm। 3 का मतलब 3U का मतलब होता है 30 cm। तो 1 फुट का ये जो आप सैटेलाइट देख रहे हो ये 1 फीट का है, और प्लैनेट स्कोप नाम का एक कंपनी है, प्लैनेट नाम का कंपनी है, और वो कंपनी का जो फाउंडर है वो नासा में काम करते थे। दे थॉट दैट मैं इतना बड़ा बड़ा सैटेलाइट नहीं बनाएंगे, हम बड़ा छोटा छोटा सैटेलाइट बनाएंगे। मैं दिखाऊंगा हाउ आई हैव सीन दो सैटेलाइट्स बीइंग डेवलप्ड एंड हाउ दे यूज्ड टू वर्क। आई हैव गन टू देयर प्लेस, आई हैव सीन दैट। So they have developed small satellites like this much of size, and their job and their role is very specific job, remote sensing satellite specific job। वो अर्थ के बहुत पास में उड़ता है, उसका कवरेज बहुत बढ़िया है, 2 दिन में पूरा अर्थ को स्कैन करता है। उनके पास में आज के टाइम पे 400 सैटेलाइट्स है, 400 सैटेलाइट, एंड ऑल दिस 400 सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड बाय इसरो। हमारा अपना इसरो ने उसको लॉन्च किया है, प्लैनेट का सारा सैटेलाइट को। और जब से ये प्लैनेट ने क्यूबसैट का कॉन्सेप्ट लाया, तब नासा, इसरो, बाकी सभी लोगों ने इसको काफी प्रमोट किया, और स्कूल, कॉलेजेस, स्टार्टअप्स, इन सभी को बोला गया आप भी क्यूबसैट प्रोग्राम का पार्ट बनिए। यू ऑल्सो डेवलप योर ओन क्यूबसैट। नासा प्रोवाइड्स a lot of funding so that if you have developed any CubeSat, so NASA provides funding to launch it in the Earth orbit. ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम नासा कर लेता है, अगर आपने डेवलप किया तो, सैटेलाइट बनाया तो नासा उसमें रिटर्न में क्या मांगता है कि उसका एक्सेस भी देना हमको, कि अगर कुछ डाटा तुम वहां से कैप्चर करो तो हमको भी एक कॉपी देना, दैट दे वांट। सो मैं इस प्लैनेट का एग्जांपल देके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस प्लैनेट क्या करता है, 2 दिन में पूरा पृथ्वी को स्कैन कर लेता है। इसके क्या होता है, सरफेस का डिफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग ऑफ द रैपिड चेंज इन द वेजिटेशन एंड द लैंड यूज। मान लो कीड़ा लग गया पेड़ में एग्रीकल्चर में, तो वो बहुत हमको यूजफुल होता है, क्योंकि इतना जल्दी, इतना फ्रिक्वेंटली वो हमको डाटा देता है, तो हम उसको मॉनिटरिंग कर पाते हैं। सो काफी सारा काम इसमें वो करता है। दिस इज द CubeSat दैट आई हैव गॉन टू द expo. I have visited them. I found that this is the CubeSat, and in this CubeSat, this is the system, propulsion system. इसमें सोलर पैनल्स है, and this is very compact and miniature version of these things. अभी ये जो ऊपर का बक्सा है, ये ऊपर का बक्सा एक पैकेट के अंदर में घुसता है। दैट पैकेट इज कॉल्ड CubeSat, दैट इज कॉल्ड पॉड। ये होता है पॉड, ये पॉड, इसके अंदर में घुसता है वो सैटेलाइट, और ये फिटिंग होता है एक लॉन्च व्हीकल के साथ में। लॉन्च व्हीकल मतलब हम मोटा मोटी भाषा में, जो चालू भाषा में, लोकल भाषा में जिसको बोलते हैं रॉकेट, उसके अंदर फिटिंग होता है। जैसे ही रॉकेट ऑर्बिट में पहुंच जाता है, तो ये सिग्नल देता है इस डब्बा को, जिसको हम बोलते हैं पॉड। पॉड्स आर 2 टाइप्स, जे पॉड, पी पॉड। तो अभी के लिए भूल जाते हैं, लेट्स, दिस आर 2 टाइप्स, जे पॉड एंड पी पॉड। तो इसके अंदर में रहता है वो, तो इसके अंदर में रहता है। तो जैसे ही उसको सिग्नल मिला कि मैं पहुंच गया, अपने ऑर्बिट में पहुंच गया, तो इसके अंदर स्प्रिंग रहता है। दिस वन आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। इसका अंदर में एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसके अंदर में एक स्प्रिंग है। वो स्प्रिंग इस डब्बा के अंदर से इतना जोर से उसको धक्का मारता है, उसका गेट खुल जाता है, धक्का मारता है, वो बाहर जा निकलता है, ऐसा खोल के, फिर ये लॉन्च हो जाता है। सो नाउ हमने इस बात के बारे में क्यों डिस्कशन किया, इसीलिए डिस्कशन किया कि ये जो ऊपर में जो सर्किट है, ये रॉकेट के साथ कनेक्टेड है। रॉकेट इसको सिग्नल देता है कि मैं पहुंच गया। जैसे ही पहुंच गया, उसका डोर खोल देता है, और अंदर स्प्रिंग है, स्प्रिंग धक्का मारता है, और सैटेलाइट बाहर में लॉन्च हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं किकिंग, सैटेलाइट किकिंग। तो ये जो सर्किट है, इसको जैसे ही सिग्नल मिलता है, उसका काम होता है दरवाजा खोल देना, स्प्रिंग है, ऑटोमेटिकली धक्का मारेगा और वो लॉन्च हो जाएगा। तो दीज आर द क्रिटिकल कंपोनेंट
जो समय समय पे कभी फेल हो जाता है, अगर फेल हो गया तो अपना मिशन खत्म हो जाता है, मिशन खराब हो जाता है। यू कैन सी दिस इज द सैटेलाइट एंड दिस इज द उसका पॉड, उसका घर। ये सैटेलाइट इसका घर के अंदर में घुसता है, इसके ऊपर में रॉकेट के साथ कनेक्टिविटी होता है, ये रॉकेट के साथ फिटिंग होता है। जैसे ही हमने जो बनाया, हमने इसको बनाया, इसमें डाल दिया, इसको एक भाड़े के रॉकेट के साथ जोड़ दिया और ये गया ऑर्बिट में, दिया सिग्नल, ये खुल गया डोर, ये डोर खुल गया तो इसके अंदर का जो स्प्रिंग है उसको धक्का मार के बाहर फेंक दिया, तो फिर वो अपना जो पंख फैला के फिर अपना ऑर्बिट में घूमना शुरू किया। इज दैट क्लियर? तो कहां कहां पर प्रोग्राम्स है, जहां जहां पर प्रोग्राम्स है वहां पर वो इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट। सो जिस प्लैनेट ने ये काम सारा किया, इतना 450 सैटेलाइट्स को पूरा पृथ्वी में घुमा रहा है, दे कलेक्ट a lot of remote sensing images, low spatial resolution, high, medium, बहुत सारे images वो कैप्चर करते हैं। तो व्हाट आई फाउंड दैट कि उसी एक्सपो में एक और कंपनी है जो प्लैनेट का एक्सपो है, प्लैनेट का ऑफिस है, प्लैनेट का अपना मैन्युफैक्चरिंग के लोग बैठे हैं, वहां पे उन्होंने एक और कंपनी को भी बुला के बिठाया है, जो कंपनी बोलता है कि उसका जो सैटेलाइट इमेज है दैट इज मच मच मोर क्लियर और मच 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 बेटर देन व्हाट द प्लैनेट इज हैविंग। तो मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी जो एक दूसरा कंपनी को लाके बिठाया है एक्सपो में, और ही इज क्लेमिंग दैट कि उसका प्रोडक्ट से इसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। देन आई आस्क दोस पीपल, देन द प्लैनेट पीपल टोल्ड मी दैट नो सर, उनका जो फोटोग्राफ्स वो दिखा रहे हैं, जो बेटर क्वालिटी का फोटोग्राफ दिखा रहा है, वो हमारा सैटेलाइट से खींचा गया फोटो ही है, लेकिन उन्होंने एआई यूज करके उस फोटोग्राफ का रिजोल्यूशन को एनहांस किया है, ना कि वो ओरिजिनली कैप्चर्ड फोटोग्राफ्स इन एडवांस रिजोल्यूशन नहीं है। तो द जनरेटिव एडवर्साइजल नेटवर्क गैन, सुपर रिजोल्यूशन जनरेटिव एडवर्साइजल नेटवर्क एसआर गैन are the popular class segments of the generative AI tools they used in that thing, कि जो एक लो रिजोल्यूशन चीजों को अपना हाई रिजोल्यूशन चीजों में कन्वर्ट करता है, क्योंकि उसको एक लो रिजोल्यूशन पिक्चर दिया, हाई रिजोल्यूशन पिक्चर दिया, वो ट्रेंड इतना अच्छे से हुआ कि लो रिजोल्यूशन पिक्चर को वो हाई रिजोल्यूशन पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पास में वो एफिशिएंसी डेवलप हुआ। तो ये एक सेगमेंट हुआ। तो जैसे ही मैंने थर्ड एक्सपो का थर्ड सेगमेंट को गया, वहां पर एक और सर्विस प्रोवाइडर था, ही वाज लाइक डिटेक्टिंग, नो मैंने उसका फोटो नहीं रख पाया, मिस किया। ही वाज लाइक डिटेक्टिंग ऑब्स्टेकल्स ऑन द कैनाल, क्योंकि एक ने फोटो लिया, दूसरे ने क्या किया, एआई लगा के फोटो का रिजोल्यूशन को एनहांस किया, तीसरा ने क्या किया, एआई रिजोल्यूशन एनहांस करने के बाद में जब कैनाल्स में पानी जा रहा है, कुछ जगह ऐसा है जहां पर मिट्टी आके पानी को ब्लॉक कर रहा है, तो वैसा ब्लॉकेट को रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ्स में से ढूंढ ढूंढ के निकालना, ये उसका काम है, उस सर्विस प्रोवाइडर का काम है। तो मैंने देखा वो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करता है यूजिंग पैलेगामा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। वो रिमोट सेंसिंग इमेज में से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है और उसको नोटिफिकेशन भेजता है सरकार को। तो वैसे ही अलग अलग एआई कंपनी रिमोट सेंसिंग इमेज के ऊपर में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और पूरा बाकायदा 6-7 कंपनी का मैंने देखा, उनका पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। एक फोटो लेता है, दूसरे को दे देता है, दूसरा उसका रिजोल्यूशन हाई बढ़ा देता है, तीसरे को दे देता है, तीसरा उसको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करके उसका ब्लॉकेट फाइनल कर रहा है, फिर चौथा को दे देता है। ऐसा करते 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 सारा कंपनी एक दूसरे को कंप्लीमेंट करके पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाए थे। So object detection from the remote sensing imagery is a very sophisticated
and very specialized way. You see, नीचे जो A, B, C मैंने 3 दिखाया हूं, बाउंडिंग बॉक्स करना, रिमोट इमेज में से हमको आइडेंटिफाई करना था. We have a product called Bihangam. In that product, what happens? We have to do a survey कि अगर हम सोलर पैनल लगाएंगे तो पूरा बिहार में कितना घर है जिनका आरसीसी छत है और वो छत प्लेन है, फ्लैट है, और उसमें सोलर पैनल लगाया जा सकता है. तो ऐसा असेसमेंट करने के लिए जितना भी रिमोट सेंसिंग इमेजेस है उसको एआई के माध्यम से बाउंडिंग बॉक्स बनाया गया, उसको क्लासिफाई किया गया, और जो मिला स्पॉट मिला, उस स्पॉट को जीआईएस के माध्यम से कनेक्ट करके उनको ऑफर दिया गया कि आप सोलर पैनल लगाओ, सरकार आपको सब्सिडी देगा. वैसे ही यहां पर यू कैन सी डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है. कोई एरोप्लेन मतलब या फिर कोई यूएवी, क्वाडकॉप्टर एंड ड्रोन टाइप का हो, या फिर कोई फिक्स्ड विंग ड्रोन या एरोप्लेन हो, या फिर कोई सैटेलाइट इमेज हो. किसी भी तरीके से हम इमेजेस को लाके उसको प्रोसेसिंग करके, प्री प्रोसेसिंग करके, एआई टूल चला के हम उसके ऊपर में बहुत सारा काम करते हैं, जिसमें हम इमेज एनालिसिस का रोल प्ले कर रहे हैं. जीआईएस में एक सबसे बड़ा पावरफुल टूल है जिसका नाम है आर्क जीआईएस. तो आर्क जीआईएस का प्रो वर्जन में अगर आप देख सकते हो, उसमें इनबिल्ड आ गया है क्लासिफिकेशन टूल, सेगमेंटेशन, ट्रेनिंग सैंपल मैनेजर, लेबल ऑब्जेक्ट फॉर डीप लर्निंग, क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन विजेट. ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आर्क जीआईएस में एआई इनबिल्ड आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड कर रहा है. इन एडिशन टू दैट, कंप्यूटर विजन, डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ये जो रियल टाइम वीडियो एनालिसिस, ये सब चीजों में भी कंप्यूटर विजन और एआई का इस्तेमाल काफी किया जाता है. तो दिस इज द इनपुट इमेज, डाटा प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन का जो चीजें हैं यहाँ पर करके हम बाउंडिंग बॉक्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं. इसमें आज के टाइम पे 3 टेक्नोलॉजी है. एक तो होता है पुराना मॉडल, दूसरा होता है CNN और YOLO, थर्ड इज द VLM, Vision Language Model. There are a lot of vision language model, just like large language model. We have GPT-4, BART, Mixtral, so Llama. Similarly, we are also having vision language model. Llama Vision is also one of the vision language model. Vision language model expertise is on visual representations or image or videos. Just like GPT is having the expertise over the language. Vision language or VLM, they are having the expertise over the images. Now I'm coming to the mission control centers and the role of AI here. ये जो बहुत बड़ा बड़ा सेंटर्स दिखते हैं, बहुत सारा LED walls, a lot of displays, units, control, ये सब चीज में एक सॉफ्टवेयर यूज होता है. वो सॉफ्टवेयर का इस सब डाटा को हम बोलते हैं टेलीमेट्री डाटा. इतना जितना सारा हम चीजें देखते हैं ना, इट इज ऑल कॉल्ड टेलीमेट्री डाटा. टेलीमेट्री डाटा मीन्स कहीं ना कहीं सेंसर से, एक्चुएटर से जो डाटा आता है, क्लाउड को थ्रो हो जाता है, फिर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको दिखाई देता है. तो अगर हमको लगेगा कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लेकिन वो ऐसा चीज नहीं है. वो जितना भी डाटा है, वो सारा डाटा को कैप्चर होता है. मैंने उसको सेगमेंट करके रखा हूं कि किस टाइप का, कितना टाइप का डाटा हम कैप्चर करते हैं. वो सारा डाटा को मैंने एक सेगमेंट करके दिखाया हूं यहाँ पे. उन सारा डाटा को, टेलीमेट्री डाटा को हम एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिसको बोलते हैं मिशन कंट्रोल सेंटर. जो हमने अभी देखा है, इसको मिशन कंट्रोल सेंटर है. और वर्ल्ड में जो सबसे पावरफुल, अगर स्पेस एजेंसी को हम बोलेंगे तो हमारे मन में हमेशा बच्चे जानते हैं, नासा. सो नासा में एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है ओपन MCT, ओपन मिशन कंट्रोल टूल. सो
ओपन एमसीटी जो टूल है वो सारा डाटा जो अलग अलग सोर्सेस में डाटा है उसको लाके अलग अलग डैशबोर्ड बना के प्रोजेक्ट करने के लिए यूज होता है। दिस इज डेवलप्ड यूजिंग Node.js, दिस इज डेवलप्ड यूजिंग Node.js एंड इसमें सारा टेलीमेट्री डाटा प्रोजेक्टेड रहता है। दिस इज डेवलप्ड बाय द नासा, ये सारा IoT डिवाइस के लिए, ड्रोन्स के लिए, क्यूसेट के लिए, रोबोटिक्स के लिए, हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, एंटरप्राइज डाटा, विजुअलाइजेशन, सारा जितना भी टेलीमेट्री डाटा उस सभी के लिए ये टूल्स इस्तेमाल होता है। एंड दिस इज ओपन सोर्स फ्री टूल्स एंड इस टूल्स का सोर्स कोड जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो Node.js में, जावास्क्रिप्ट में, इसको मॉडिफिकेशन करके दोबारा लॉन्च कर सकते हो। इसमें कुछ एल्गोरिथम्स AI लगाना चाहते हो तो इसी के अंदर में AI प्लगइन्स लगा सकते हैं। हम जो चीजें रिसर्च पेपर में लिखने के लिए लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं, बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि एकेडमिक पर्पस के लिए पब्लिश कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूज करने के लिए हमारे पास में वो बड़ा सिस्टम नहीं होता जिसमें एक मेरा जो प्रोग्राम है वो पार्ट बनेगा। तो ये वो टूल है जिसके अंदर में आप अपना एक एनहांस प्रोग्राम बना सकते हो, जिसमें मान सकते हो कि ओपन एमसीटी का एडवांस वर्जन आपने बनाया जिसमें आपने खुद से अपना कुछ मॉड्यूल लगाया। सो न्यूरल नेटवर्क, ये सारा जो टेलीमेट्री डाटा है, जितना टेलीमेट्री डाटा, इन डाटा को एनालिसिस करके बहुत सारा आउटपुट प्रेडिक्शंस कर सकता है। तो दीज आर बहुत सारा आउटपुट प्रेडिक्शंस वगैरह कर सकते हैं। सो हम लोग जो सैटेलाइट्स बना के टेस्टिंग पर्पस के लिए हमको कम्युनिकेशन कर रहे थे, दैट वाज इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही बहुत सारा जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर्स है, वो सब लोअर अर्थ ऑर्बिट के आसपास में ही रहते हैं। एक सवाल है आपसे, अगर जीपीएस हमको लोकेशन बताते हैं, अपना सैटेलाइट का लोकेशन बताता, सॉरी अपना लोकेशन बताता है यूजिंग द सैटेलाइट, बिकॉज जीपीएस इज नथिंग बट combination of multiple satellites giving the locations of any objects in the earth. तो जो सैटेलाइट्स मैंने रॉकेट में लेकर ऊपर में लॉन्च कर दिया, अब वो मेरे साथ कम्युनिकेट करेगा। कैसे कम्युनिकेट करेगा? पृथ्वी तो गोल है, तो उसको कम्युनिकेट कैसे करेगा? आपने सवाल ये मन में आएगा कि अगर मैंने इसको घर में बनाया सैटेलाइट्स को, और मैंने क्या बोला कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यू टेक सम lakhs of rupees, यू लॉन्च में सैटेलाइट ऑन द ऑर्बिट, वो तो कर देगा, हो गया, बात खत्म। लेकिन उसके बाद में मैं उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करूंगा, बात कैसे करूंगा? क्योंकि वो 40 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड में घूमेगा, तो कौन सा एंटीना में उसके साथ कम्युनिकेट करूंगा? तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कि राइट नाउ मेरा सैटेलाइट है कहाँ, तो उसका लोकेशन मुझे कौन बताएगा? क्योंकि मेरा लोकेशन सैटेलाइट बताता है, सैटेलाइट का लोकेशन कौन बताएगा? Right now, I am opening this question to all of you. Anybody can answer? मेरा लोकेशन अगर सैटेलाइट बताता है तो सैटेलाइट का लोकेशन कौन बताएगा? You want to raise hand? ग्राउंड स्टेशन है। कौन? अगर 3 ग्राउंड स्टेशन है तो उससे हमें 3 ग्राउंड स्टेशन है तो हमको सैटेलाइट का लोकेशन पता चलेगा। 3 ग्राउंड स्टेशन, ओके। तो बेसिकली सैटेलाइट का लोकेशन बताना बहुत टफ जॉब होता है। जैसे एक इंसान या ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने के लिए हमको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड तीनों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है। वैसे सैटेलाइट का लोकेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड 2 लाइन एलिमेंट कोड। ये 2 लाइन एलिमेंट कोड जो होता है, ये लंबा लाइन करके बहुत सारा फिगर्स उसमें होता है, जिसमें मैं यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अप टू 69 कॉलम्स है। तो उसमें बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, जैसे हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड, ये तीनों चीज मिलेगा तो एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता चलता है। वैसे ही सैटेलाइट का लोकेशन जानने के लिए हमको टोटल 69 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ता है। वो 69 पैरामीटर्स पता चलने से ही हम सैटेलाइट का लोकेशन बता सकते हैं। ये कोई भी ऐसा तरीका नहीं कि नीचे 3 ग्राउंड स्टेशन लगा दो और पता चल जाएगा, क्योंकि वो 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में घूमता है, और वो पृथ्वी का कौन सा 3 सैटेलाइट होगा, और पृथ्वी गोल है, इस टाइप का है, कर्वेचर है, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं हो।
और इस चीज को बोलते हैं टीएलई। तो जब भी हम कोई भी टॉक में या फिर किसी स्पेस इंडस्ट्री के पर्सन के साथ बात करें, बोलते हैं उसका टीएलई कोड क्या है, तो सैटेलाइट है तो सैटेलाइट का टीएलई कोड क्या है, मैं अगर किसी भी सैटेलाइट का टीएलई कोड मांगूंगा एग्जाम, वो रनिंग इन सर्विस होगा। मैं इसको शेयर करूंगा लिंक, थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो एग्जैक्टली हर सैटेलाइट का एक टीएलई कोड होता है, और वो टीएलई कोड जो होता है वो समय के समय बदलता है, मतलब द टीएलई कोड चेंजेस आफ्टर 1 आवर। अब होता क्या है, द मोमेंट मैंने सैटेलाइट को लॉन्च किया तो इसमें सैटेलाइट कैटलॉग नंबर होता है, ये सैटेलाइट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो होता है। डिटेल्स दिया नहीं दिया, तो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफाइड सैटेलाइट है या अनक्लासिफाइड सैटेलाइट है, तो इंटरनेशनल डिजाइन डेजिग्नेटर होता है, तो ये अलग अलग नंबर्स होता है। तो एक नोरड बोल के ऑर्गेनाइजेशन है जो हमको सैटेलाइट को एक आइडेंटिफिकेशन देता है, उसका प्राइमरी की, सैटेलाइट का प्राइमरी की देता है। तो ये सारा नंबर्स क्या होता है, जब लॉन्चिंग करते हैं तो लॉन्चिंग करने के वक्त क्या होता है, ये सारा नंबर एक बार इनिशियलाइज हो जाता है। लॉन्चिंग करने के वक्त इसको कैप्चर करना पड़ता है, मैंने कितना वेलोसिटी से उसको किक किया, कहां पे किक किया, जब मैंने किक किया तो कौन सा एंगल में वो था, पृथ्वी का कौन सा एंगल्स में मैंने इसको किक किया, क्या उसका जो कैमरा है वो नीचे की तरफ था कि ऊपर की तरफ था। तो एवरीथिंग हैज टू बी कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ द किकिंग इनटू द ऑर्बिट। और उसके बाद में ये टीएलई बोल देगा अगले 2 घंटे बाद वो कहां पे होगा। मान लो उसने बोल दिया कि अगले 2 घंटे के बाद में, टीएलई से हमको पता चलेगा कि मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका, इसका सॉफ्टवेयर टूल्स है। इवन पाइथन में अगर आप टीएलई के लिए ढूंढेंगे ना, पाइथन में टीएलई के लिए ढूंढने से भी आपको मिल जाएगा कि पाइथन लाइब्रेरी, एक सेकेंड, कर दिस। तो ये लाइब्रेरीज आर आल्सो अवेलेबल, जिसमें आपका ऐसा है 2 लाइन एलिमेंट कोड, 2 लाइन, लाइन 1, लाइन 2। सो टीएलई देने से ये आपको पैकेज ऑलरेडी रेडीमेड पैकेज है, ये आपको कैलकुलेट करके बोलेगा कि अभी अगले नेक्स्ट 2 घंटे के बाद में वो कहाँ पे होगा, उसका लोकेशन बोलेगा। तो जो लोकेशन बोलेगा तो उस एरिया का जो ग्राउंड स्टेशन है, वो ग्राउंड स्टेशन हमको, हमारा साथ में क्या होगा, उसके साथ कोलैबोरेशन। तो वो ग्राउंड स्टेशन को हम बोलेंगे कि भाई तेरे पास में ये एक सैटेलाइट गुजरने वाला है, तो तेरे साथ में जो कम्युनिकेशन है उसका डाटा मेरे को दे। तो वो डाटा उस सैटेलाइट को, उस ग्राउंड स्टेशन को भेजेगा, ग्राउंड स्टेशन हमारा ग्राउंड स्टेशन को कम्युनिकेट करता है। सो इससे क्या होगा, और उसने प्रेडिक्ट किया था कि 3:25 में जापान के ऊपर में जाएगा, लेकिन वो गया कितने बजे, 3:26 पे गया। और ये प्रेडिक्शन हुआ था कि 3:25 पे इतना डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन डायरेक्शन में थोड़ा सा डेविएशन हो गया। ये जो डेविएशन रिकॉर्ड हुआ, ये पिछले एक्सपेक्टेड बिहेवियर, इस बिहेवियर को देखते हुए टीएलई अपडेट हो जाएगा, तो नया टीएलई मिलेगा। तो एक सैटेलाइट का लाइव टीएलई हमेशा हम ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि टीएलई चेंज होता रहता है। तो यहां पर जो टीएलई को पकड़ के हम एक नया टीएलई को प्रिडिक्शन करते हैं, there is a scope and very possible and potential opportunity that AI can play a role here in predicting that अगर अभी 1 घंटे में सैटेलाइट ने इतना ऑर्बिट लूज किया, इतना डेविएशन किया, समय का डेविएशन इतना किया, तो इसका मतलब है बेसिकली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट अगले 2 घंटे के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि दिस इज अ गेम ऑफ प्रेडिक्शन। व्हेन देयर वाज नो
powerful AI tools available in the market and in the research were not that much of matured enough. So TLE was playing a very potential role. But अभी ये TLE का जो प्रेडिक्शन करना और TLE को फिर अपग्रेड करना, ये सब चीज के लिए AI का बहुत सारा रोल इसमें है. नेक्स्ट आई एम सेइंग दैट ग्राउंड स्टेशन, मैंने बोला जब सैटेलाइट मेरे ऊपर में जाएगा, जब सैटेलाइट मेरे ऊपर में जाएगा, जब सैटेलाइट मेरे ऊपर में जाएगा तो मेरे पास में जो एंटीना होगा वो सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करेगा. तो आपके मन में सवाल आया कि सर हम जो सैटेलाइट बोल रहे हैं वो है क्या चीज. देखो, अगर सैटेलाइट के अंदर में से मैं इंजन को निकाल दूं, इंजन जो सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट पे रखता है, अगर उसको निकाल दूं तो सैटेलाइट एक एडिनो या रास्पबेरी पाई है, दैट्स इट. अगर मैं इंजन को उसमें डाल दूं तो उसको पावर चाहिए, इसका पावर मॉड्यूल जुड़ जाएगा. तो फिर वो एक आर्डिनो और रास्पबेरी पाई से कुछ बड़ा हो गया वो. तो आपका सवाल ये होगा कि सर सैटेलाइट में अगर इंजन नहीं रहेगा तो क्या वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, और उसका साइज बहुत छोटा रहेगा. क्यों चलेगा? क्योंकि अगर उसके अंदर से मैं इंजन को निकाल दूं तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द ग्रेविटी के बीच में जो बैलेंस है, अगर वो प्रॉपर है तो वो ऐसा ऐसा पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा. लेकिन द पॉइंट इज दैट द अर्थ इज नॉट वेरी यूनिफॉर्म. द मासेस ऑफ द अर्थ इज नॉट थ्योरेटिकली अर्थ सेंटर में प्रेजेंट है. सो m1 m2 by r स्क्वायर जो फॉर्मूला है, वो m1 m2 का जो r है, डिस्टेंस है, वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता. तो वो घूमने के समय पे कहीं पर ग्रेविटी ज्यादा है तो कहीं पर ग्रेविटी कम है. इसके वजह से वो ऑर्बिट लूज कर जाता है. जब ये ऑर्बिट लूज कर जाता है, इंजन जो उसके पास में इनबिल्ड होता, तो वो थोड़ा सा उसको धक्का मार के फिर वापस ऑर्बिट में छोड़ देता, तो वो बहुत सालों तक घूम सकता है. अगर इंजन नहीं है तो वो स्पाइरल जैसा घूमते 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 वो नीचे ग्रेविटी में आके नीचे घुस जाएगा और एनवायरमेंट में वो जल के राख हो जाएगा. सो फॉर द टेस्टिंग पर्पस जब मैंने अपने सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़ा तो उसमें मैंने इंजन को निकाला, क्योंकि इंजन रहेगा तो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, मेरे को ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगा. और मेरा ऑब्जेक्टिव है 3-4 महीना चल गया ऊपर तो मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म, वो गिर जाना, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. 2-4-5 लाख रुपए में मेरा काम टेस्टिंग हो जाएगा. तो उसका अंदर से इंजन निकाल दिया. मान लो उसके अंदर में इंजन है तो वो घूम रहा है, तो मैं उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करूंगा? तो कम्युनिकेट करने के लिए मेरे को बड़ा बड़ा एंटीना की जरूरत है जो उसके साथ कम्युनिकेट करेगा. और एक एंटीना से नहीं होगा, मेरे को जापान के साथ में भी कोलैबोरेशन चाहिए, मेरे को रशिया के साथ में भी कोलैबोरेशन चाहिए. मैं तो वो एक इंडिविजुअल आदमी, आप लोग भी इंडिविजुअल आदमी हो. आप लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, उसमें डाटा को डाला और चाहते हो कि डाटा जो है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है मेरे सैटेलाइट में एक रास्पबेरी पाई उसमें इंस्टॉल हो जाए. अब होगा कैसे इंस्टॉल? सैटेलाइट ऊपर में घूम रहा है, आपका घर के अंदर में यूएसबी पोर्ट देके तो इंस्टॉल करोगे नहीं, तो करोगे कैसे? तब क्या करना है, हमको एंटीना चाहिए जिसको हम बोलते हैं जीएसएस, ग्राउंड स्टेशन. तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, बहुत सारा ऐसा ग्राउंड स्टेशन मार्केट में अर्थ में अलग अलग जगह पे इंस्टॉल किया और उसने ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस लॉन्च किया. जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सिक्योरिटी एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस. मीन्स अगर मैं अपना खुद का सैटेलाइट है तो मेरे को खुद का एंटीना का जरूरत नहीं है. मैं माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करूंगा. उसमें एक मॉड्यूल है जिसका नाम है ऑर्बिटल. उस मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा और वहां पर कुछ अबराकडाबरा मैनेजमेंट, कुछ मैजिकल काम ऐसा करूंगा जिसके जो वो स्पेशलाइज्ड एरिया है, मतलब उसमें अगर मैं टॉक दूंगा तो पूरा टॉक उसी में चला जाएगा, इतना बड़ा एरिया है वो. तो वहां पर मैं ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगर करूंगा. उसके बाद में क्या होगा, मैं घर बैठे अपने लैपटॉप में कुछ कमांड दिया, वो कमांड जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर को. माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर उस कमांड को पुश कर देगा उसका ग्राउंड स्टेशन को. उसका ग्राउंड स्टेशन का एंटीना जो है उसको पुश कर देगा मेरा सैटेलाइट. और मेरा सैटेलाइट में जो अपलिंक डाउनलिंक हुआ उसको हम बोलते हैं एंटीना टाइम.
जितना मैंने उसका एंटीना को यूज किया, चाहे अपलिंक करने के लिए या डाउनलिंक करने के लिए, उसके हिसाब से मैं माइक्रोसॉफ्ट को पेमेंट करूंगा, वो मेरा क्रेडिट कार्ड से पैसा कट जाएगा। सिंपल, लुक एट दिस। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट में एक क्रेडिट कार्ड देके मैं लॉग इन करूंगा और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में मैं अपना अकाउंट खोल के उसमें लॉग इन करूंगा, ऑर्बिटल सर्विस लूंगा। ऑर्बिटल सर्विस के साथ में दुनिया भर का ग्राउंड स्टेशन ऑलरेडी कनेक्टेड है, उनका कंसोर्शियम ऑलरेडी है। हम अपना सैटेलाइट के साथ में अपलिंक डाउनलिंक का काम कर सकते हो। अगर आप में से कोई इसको सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो ये कैसे काम करता है, और आपके पास में अभी सैटेलाइट नहीं है, तो दुनिया में ऐसा ओपन सैटेलाइट भी है जहां से इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। अपलोड तो नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू अपलोड एनी डाटा टू द सैटेलाइट, बट देयर आर एनी पब्लिक सैटेलाइट जिसका डाटा पब्लिक के लिए अवेलेबल है, ओपनली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूजिंग एज्योर ऑर्बिटल यू कैन सर्च दोज सैटेलाइट एंड यू कैन enter the TLE code where is the satellite is, then the Azure will connect with the satellite, track this satellite, and you can download the data from the satellites and you can read those data. So that is how the cloud computing is now transformed the heavy capital extensive technology area into a household small scale laptop में काम करने जैसा टेक्नोलॉजी में चला के आ गया पास। If the Indian bureaucrats right now thinks that this space is not our cup of tea, then तो हो गया, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी चीजों को इतना ग्राउंड तक लेके आया है, हमारा डोर स्टेप तक लेके आ गया कि हम अपना घर में एक रास्पबेरी पाई यूज करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको हम इसरो, अंतरिक्ष या एनएस न्यू स्पेस एजेंसी लिमिटेड, इनके माध्यम से भाड़े में, हम रेंट में उसको, एक रॉकेट जा रहा है तो उसमें इसको बोलते हैं हिच सर्विस, हम हिच सर्विस लेके उसमें डाल के उसको भेज सकते हो और उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी ग्राउंड स्टेशन का जरूरत नहीं है। आप अपना क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्चा करके अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑर्बिट में जाके उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। इतना सारा चीज होने के बाद में अगर हम इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप खोल नहीं पा रहे हैं या फिर हमारा एचआर इतना कैपेबल नहीं बन पा रहा है कि इस इंडस्ट्री में जो स्टार्टअप ऑलरेडी खुला हुआ है उसमें काम कर पाए, तो फिर हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने ऐसा किया तो गूगल क्यों चुप बैठेगा? गूगल ने भी लिप स्पेस बोल के खोला, लेकिन वो एज्योर के जैसा, ऑर्बिटल के जैसे इतना सक्सेसफुल और इतना गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाया। मैंने लेकिन जब किया तो व्हाट आई फाउंड दैट माइक्रोसॉफ्ट वाज चार्जिंग ए लॉट्स ऑफ मनी, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच whenever I was trying to give training in the real life satellite programs to my teammates, मेरा बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा था, मेरा अकाउंट से ही पैसा चला जा रहा था। तो मैंने क्या किया, ये जो डिवाइस आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये डिवाइस जो है, ये है इट इज कॉल्ड IoT गेटवे। दिस इज TTN, द थिंग्स नेटवर्क का IoT गेटवे। इसको लाके खरीदा, इसको लाया आई थिंक 40,000 चाइना से, ड्रैगिनो कंपनी का है। जब चाइना से 40,000 से लेके इसको खोल दिया तो उसके अंदर से निकला रास्पबेरी पाई और उसके साथ में एक हैट लगा हुआ था जो कुल मिला के 11-12 हजार का था। ये 40-50 हजार का चीज है और 11-12 हजार में हमारा बन भी गया। तो एक तो खरीदा, दूसरा हमने उसको देखते हुए खुद बना दिया 11-12 हजार रुपए में। और ये जो नीचे में लिखा है ये है द थिंग्स नेटवर्क। थिंग्स नेटवर्क ऐसा चीज होता है जिसमें आपके और मेरे जैसे बहुत सारा हॉबी लोग अपनी खुशी के लिए ऐसा बहुत सारा एंटीना पूरा धरती पे लगा के रखें और कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल यूज करते हैं लोरा। आई होप बहुत सारे लोग होंगे जो लोरा का नाम सुने होंगे और कुछ लोग लोरा का नाम नहीं भी सुन सकते। जो IoT में डील करते हैं वो लोरा का नाम बिल्कुल सुने होंगे, जिसका नाम है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, छोटे छोटे बर्स्ट में डाटा भेजता है, 50 किलोबाइट एंड 60 किलोबाइट के हिसाब से बर्स्ट डाटा फेंक। क्योंकि मेरा सैटेलाइट जो है, मेरे को प्रेशर और केमिकल्स, वहां पे जो एयर में केमिकल्स है या फिर एयर में जो पैरामीटर्स है उसी को कैप्चर करके देता था, ना कि मेरे को कोई फोटो कैप्चर करके देता था। तो इसलिए मैंने क्या किया,
लोरा यूज करके मैंने डाटा को अपने सैटेलाइट से अपना एंटीना देखे या फिर किसी और का, मतलब ये 20,000 लोगों का एक समूह है, टीटीएन द थिंग्स नेटवर्क, 20,000 लोगों का एक कम्युनिटी है। तो वो किसी के पास में भी अगर कैप्चर्ड हो गया डाटा, वो मेरे पास में भेज देगा, वैसा मैकेनिज्म उसमें रहता है। तो उसका यूज करके मैंने अपने सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन किया। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है कि सैटेलाइट में अगर कैमरा लगा है और वो रिमोट सेंसिंग इमेज ड्रॉ कर रहा है, तो उतना हेवी डाटा वो धरती को नहीं भेज पाएगा यूजिंग लोरा। लोरा 700 किलोमीटर तक भी डाटा भेज सकता है इन द स्पेस, 700 किलोमीटर तक भी भेज सकता है इन द स्पेस, बट उसका साइज ऑफ द डाटा हैज टू बी वेरी 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 लिमिटेड। So this LoRa is also having some architectural things like network server, concentrator, application server. It works in a different mechanism. जब डाटा सैटेलाइट से किसी थर्ड पार्टी कम्युनिटी पर्सन के पास में, जो उसके डिवाइस में आता है, तो फिर वहां से मेरे पास में आता है। क्योंकि सैटेलाइट जापान में है, तो जापान के ऊपर में है, तो जापान का जो डेवलप कम्युनिटी है वहां पे पहले एंटीना में कैप्चर होगा, फिर वो कैप्चर होने के बाद मेरे पास में आएगा। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट जिसने पहले कैप्चर किया वो उस डाटा पैकेट को खोल के देख सकता है और उसके यूटिलाइजेशन कर सकता है, जो मेरा प्रिवेसी और मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर में क्वेश्चन होता है। इसके वजह से डाटा जो है एईएस सिक्योर करके एप्लीकेशन डाटा को पहले सैटेलाइट पे भेजा जाता है, ताकि जो इसको रिसीव करेगा तो उसका इंटरनल डाटा को नहीं देख पाएगा, सिर्फ उसका मेटा डाटा को देखेगा और अप्रोप्रिएट कंसर्न पर्सन को फिर वो डिवाइस से उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो दिस इज हाउ द थिंग्स नेटवर्क वर्क्स। Next, the last point, I'm moving to the last point. This is called the professional data communication. When ड्रैगन कैप्सूल, जब यूट्यूब में देखेंगे ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च होता है, तो उसमें वो जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो लोग वट एवर दे आर डूइंग, दिस इज लाइव टेलीकास्ट ओवर द यूट्यूब लाइव। और वो यूट्यूब लाइव का वीडियो जब देखेंगे, यू विल फाइंड इट इज वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। इवन जब हम लोग यहाँ पर बीसी में बात करते हैं, हेलो हेलो बोलते हैं, वॉइस सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता है, साउंड प्रॉपर्ली नहीं आता है, लेकिन वो स्पेस में से डाटा जो आता है वो काफी क्लियर रहता है। तो व्हाट प्रोटोकॉल दे नॉर्मली यूज, दिस इज नॉट टीसीपी आईपी, दिस इज नॉट यूडीपी, दिस इज कॉल्ड डीटीएन, दैट इज कॉल्ड डिले टॉलरेंट नेटवर्क और डिसरप्शन टॉलरेंट नेटवर्क। दिस इज अ प्रोटोकॉल, दिस इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो रिमोट एरिया में भी उसको इनोवेटिवली यूज किया जाता है डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए, जिसमें जो इंटरमीडिएटरी रूटर डिवाइसेस होते हैं, वो रूटर डिवाइसेस में स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, एंड इफ एनी पैकेट फेल्स टू बी डिलीवर्ड टू द नेक्स्ट रूटर डिवाइस, तो वो इंटरमीडिएटरी उस जगह पे स्टोर होता है, एंड व्हेनेवर द कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड, तो फिर वो डाटा आगे बढ़ जाता है। दैट इज हाउ द डीटीएन वर्क। लेकिन आई थिंक आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग व्हाट एवर द डीटीएन इज। द नासा आस्क्ड पीपल हैविंग expertise over the DTN in time to time for recruitment also. So DTN is not what is presented in this particular diagram. It is just an introduction. So you can have exposure about the DTN, hence DATI, because there are a lot of simulation also available. You can use a simulation tool to learn and explore DTN. Point to be noted, scientists are also thinking about using DTN not only in the space but also on the earth, where rural places are there and the data communication is also a challenge. So similar protocol and technologies are also very helpful. You know that currently in the earth we are having a lot of computers, mesh topology, star topology, router, switch, software defined data center, software defined virtual router, virtual machines, hypervisor, so many things are there, so many network devices are there. Similarly, in the space also, there are so many data communication devices are there. They are rovering here and there only to communicate the data. There is a concept of graveyard and orbit, and this is the part where the role of AI is very, very critical. Why? Now the parts of the Chandrayaan-3 launcher uncontrollably re-entered the Earth's atmosphere. Look at this news and look at this red box here. The 25 years rule.
What is the meaning of this 25 years rule? The re-entry of the rocket body took place within 124 days of its launch. The post-mission orbital lifetime of this cryogenic upper stage is thus fully compliant with the 24 years rule for this thing. Basically, whenever the satellites, any payload, anything, any payloads is there, it has to be destroyed not in the orbit where it is. There is some orbit defined. In those orbit only the satellites or the payloads or the launch vehicles has to be destroyed. So the flight controller or the flight computer in the system has to take a call that this is the time where my life has ended. I have to, before time, I have to have sufficient amount of fuel so that I can go to my death orbit. If before that prediction the fuel exhaust, then the orbit में ही वो सैटेलाइट रह जाएगा और वो डेथ ऑर्बिट को जा नहीं पाएगा, फिर गार्बेज होके डेब्रीज होके घूमता रहेगा, फिर दूसरे सैटेलाइट को गिरा देगा। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ है कि पहले प्रेडिक्ट करना है कि भाई देखो तुम्हारा लाइफ टाइम 4 साल है, तुम्हारा 4 साल 24 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि तुम सफिशिएंट टाइम पहले अपने आप को डेथ ऑर्बिट में डाल देना। नाउ द चैलेंज इज दैट मेरा लाइफ टाइम डिफाइन होता है मेरा फ्यूल कैपेसिटी के ऊपर में, और मेरा फ्यूल कब यूज होता है? जब मैं ऑर्बिट लूज करता हूं तभी मेरा फ्यूल यूज होता है। जैसे ही मैं वापस ऑर्बिट पे आ गया तो मेरा इंजन बंद हो जाता है और मैं अपने आप घूमता हूं। पॉइंट टू बी नोटेड, सैटेलाइट में जो इंजन होता है वो हमेशा नहीं चलता कि मेरा गाड़ी चल रहा है तो 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखाता है तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा कि कितना किलोमीटर जाऊंगा तो कितना जल्दी तेल खत्म हो जाएगा। सैटेलाइट जब ऑर्बिट लूज करेगा, ऑर्बिट में वापस आने के लिए इंजन चलेगा, तब मेरे फ्यूल का यूज होगा। तो कितना फ्यूल मेरे पास में कंज्यूम हो गया और कितना फ्यूल मेरे पास में बाकी है, इस चीज का प्रॉपर प्रेडिक्शन करते हुए कितना टाइम में चल सकता हूं और आने वाला समय पे कितना मेरा ऑर्बिट लूज होगा, और इसका प्रॉपर प्रेडिक्शन करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। इसीलिए इसरो का थ्रस्ट एरिया ऑफ रिसर्च में ये भी एक रिसर्च है कि टू अंडरस्टैंड और प्रेडिक्ट कि आने वाला समय पे मेरा कितना फ्यूल कंजप्शन हो सकता है और मेरा लाइफ टाइम कितना है। अगर समय से पहले मैं अपने आप को डेथ ऑर्बिट में डाल दूंगा तो बात कॉस्ट ओवरराइड हो जाता है मेरे लिए, ओवररन हो जाता है मेरे लिए कि मैंने और 2 साल जा सकता था लेकिन पहले से ही अपने आप को मार दिया। अगर मैंने लालच में आके बहुत लंबा खींच लिया और सडनली मेरा गाड़ी से तेल खत्म हो गया तो मैं फिर इंटरनेशनल कानून को वायोलेट करूंगा और अपने डेब्रीज को वहां घुमाता रहूंगा कि मेरे पास में कोई भी एवेन्यू नहीं है कि मैं उसको डेथ ऑर्बिट में लेके जा सकूं। तो प्रेडिक्शन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द सैटेलाइट बेस्ड ऑन द फ्यूल कैपेसिटी, फ्यूल यूटिलाइजेशन, ऑर्बिट लॉस थिंग्स एंड अदर पैरामीटर्स। सो एक्सपायरी टाइम को प्रेडिक्ट करना भी एक ओपन रिसर्च चैलेंज है। तो डेथ ऑर्बिट 2 है, एक तो होता है अपना एटमॉस्फेयर, नीचे गिर जाओ जल जाएगा खत्म। लेकिन जो सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में है वो कूद जाएगा एटमॉस्फेयर पे और एटमॉस्फेयर पे टकरा के वो जल जाएगा, उसके लिए बड़ा इजी है। लेकिन एटमॉस्फेयर धरती के पास में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो 35,000 किलोमीटर अहेड है, 35,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और लोअर अर्थ ऑर्बिट कितने में है? तो 300-400 किलोमीटर। कहाँ 300-400 किलोमीटर जो जंप करके एनवायरमेंट में आ सकता है, लेकिन जो 35,000 किलोमीटर है उतना दूर तो से तो आएगा नहीं मरने के लिए यहाँ पे। तो 35,000 किलोमीटर वाले के पास में उसका अपना एक ऑर्बिट है बाहर है। तो 36,000 किलोमीटर यहाँ पर भी एक ऑर्बिट है जो बाहर में, तो वो बाहर चला जाएगा, वो एटमॉस्फेयर से बाहर तो अलग सा डेथ ऑर्बिट डिफाइन किया गया, वहां पर जाके अपना गिरेगा। So in the history, it is evident that after the pushing to the death orbit also, satellite was active for years due to the wrong prediction of the date of death. Satellite exhaust their fuel before reaching to the death orbit due to the delay in deorbiting the activity just because of the wrong prediction. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा हिस्ट्री में ये बार बार हुआ है कि डेथ ऑर्बिट को डालने के बाद में भी
सैटेलाइट सालों तक काम करता है और हमने अपना सैटेलाइट को बेकार में वेस्ट कर दिया। और ऐसा भी एविडेंट है कि घूमते घूमते डेथ ऑर्बिट को जाने का रास्ते से ही वो मर जाता है और वो दूसरे सैटेलाइट्स को हार्म करता है जो वर्किंग कंडीशन में रहता है। तो आई थिंक this is 7:30, so I always stick to the time. Still, thank you. And if anybody wants to discuss or ask questions, we can discuss. But the thing is that my point is very simple. Don't think the space and the rocket industry as a very high valued and very ultra complex technology area. This is the time that we should jump in and make some real research, AI ML, use of cloud computing in the area of this space technology, so that our upcoming startups, there are 42 satellite space agencies, space startups are there in India. They can get the benefit out of the research done by from the academic organizations. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for that truly stimulating and in-depth session on this space tech and role of AI and cloud. We are truly grateful that you could take the time from your busy schedule to share your expertise with our faculty during this Atal Fdp. Thank you once again, sir. If any doubts, sir, one query is there. Please Yeah. give, somebody is doing. Please give analogy between satellite network and a swarm of drone network. Again. Please give analogy between satellite network and a swarm of drone network. Can I see similar thing in drone network? Satellite network and drone network both are same or different? सैटेलाइट में लोड अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स है और ड्रोन्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो लोअर अर्थ ऑर्बिट से नियो और जियो को जाते हैं उसके और ड्रोन्स के बीच में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, बिकॉज ऑफ द जंपिंग ऑफ ऑर्बिट। मींस हम एक ऑर्बिट में जाके उसको छोड़ दिया, वो रह गया वहां पे, दैट्स फाइन। बट जो 36,000 किलोमीटर को जाता है तो वहां पर इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्हीकल नहीं है जो किसी भी सैटेलाइट को लेके कम्युनिकेशन सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर तक ड्रॉप कर पाए। तो उसमें क्या होता है, जब ऊपर जाता है तो वो ग्रेविटी को यूज करता है, ड्रोन ग्रेविटी को रेजिस्ट करता है। ड्रोन अपने आप को बैलेंस करता है, वो चाहता है मैं ग्रेविटी से दूर जाऊं, ग्रेविटी को हटाऊं, ग्रेविटी मेरे को नीचे खींच रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा। लेकिन यहां पर ड्रोन्स ग्रेविटी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सैटेलाइट में हमेशा कोशिश किया जाता है ग्रेविटी और घूमने के वजह से ऑर्बिटल मोशंस का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका जो बैलेंस है उसका यूटिलाइज करते हुए दूसरा प्लैनेट या दूसरा सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल मोशन के साथ में, उसका ऑर्बिट के साथ में ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप करने का जो फिजिक्स है वो जो ड्रोन्स में नहीं है। ड्रोन अपने आप को बैलेंस करने में इतना एनर्जी कंज्यूम करते हैं कि आज के टाइम पे डीजे फैंटम सीरीज का कोई भी ड्रोन लेके चलोगे 40 मिनट मैक्सिमम, अगर वो फिक्स डूइंग ड्रोन है तो 1 घंटा, अगर क्वाडकॉप्टर है तो 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है 1.5 घंटा। और ये सैटेलाइट कैसा होता है 5 साल 6 साल फ्यूल जाता ही नहीं है, करेक्ट। तो ये दो जो क्रिटिकल चीज डिफरेंस है, वो क्रिटिकल डिफरेंस ये है, ड्रोन ग्रेविटी को रेजिस्ट करके काम कर रहा है, ये ग्रेविटी को यूज करके काम कर रहा है। ड्रोन ऑर्बिट के बारे में नहीं सोचता, ये ऑर्बिट के बारे में सोचता है क्योंकि उसको पता है कि एक समय आएगा जब मेरे को थोड़ा सा इंजन स्टार्ट करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को जंप करना है, ताकि मैं जंप करते करते 36,000 किलोमीटर तक जा सकता। और पावर का इस्तेमाल जो सैटेलाइट्स करता है और जो ड्रोन करते हैं इनमें से काफी गैप्स है। और बाकी रहा कम्युनिकेशन के अंदर में, स्वार्म पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन के अंदर में, तो स्वार्म पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन के अंदर में मैं बोलूंगा कि ड्रोन्स आर मच मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस देन सैटेलाइट के सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बीच में। सैटेलाइट का कम्युनिकेशन, स्वार्म कम्युनिकेशन
अभी रिसेंटली मैंने जो प्लैनेट के बारे में बोला, दे आर इन स्वार्म कम्युनिकेशन, यानी पूरा पृथ्वी को ऐसे कवर करके पूरा जाते हैं। देयर प्रोसेस इज, आई कैन शो यू, वी कैन शो इट इन गूगल ऑल्सो। वो 250 पहले 250 थे, अभी 400 हो गए। 400 छोटा छोटा सैटेलाइट, दे आर इन द स्वार्म फॉर्मेशन में जाते हैं, वो सारा चीज को कवर करते हैं। अगर कोई सैटेलाइट जाता है, किसी इमेज को कवर करता है, सॉरी किसी जियो लोकेशन को कवर करता है जो क्लाउड कवर्ड है, तो दे कम्युनिकेट विद अनदर सैटेलाइट्स कि भाई देखो मैं ये जगह को कवर किया था, वो क्लाउड कवर था, अब तुम इसको कवर कर लेना, इसको उसका फोटो ले लेना। तो ये जो ट्रेंड शुरू हुआ, ये करीब करीब 3-3.5 साल से ही शुरू हुआ, 3-4 साल से शुरू हुआ। लेकिन ड्रोन में स्वार्म कम्युनिकेशन की चीजें काफी रिसर्च काफी पहले से इंप्रूवमेंट आ चुका है। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग सर, एक्चुअली आपने जो बोला है वो सही बात है। और ड्रोन में एक और चीज अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो कि एक सोलर पैनल यूज करने की, और वो सैटेलाइट से पहले से ही है। सैटेलाइट में एक एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगता है, जो यहाँ पे ड्रोन में अभी लगना चालू हुआ है। जैसे कैट्स वॉरियर हो गया, जैसे हम ये हो गया, उस सब में चालू हो रहा है अभी। सर एक्चुअली ये जो सोलर पैनल जो लग रहा है सैटेलाइट में, अच्छा जो जनरल सोलर पैनल है, उसके अंदर के थोड़ा बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। रेडिएशन। थोड़ा अगर आप उसके ऊपर रेडिएशन थोड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं स्पेस ग्रिड सोलर पैनल। स्पेस ग्रिड सोलर पैनल एंड नॉर्मल सोलर पैनल में काफी डिफरेंस होता है। पहले तो होता है स्पेस ग्रिड सोलर पैनल का जो एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, सोलर स्पेस ग्रिड सोलर पैनल में क्या होता है, जो रेडिएशन रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जोन के अंदर में जाने के समय पे भी जो रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन को टॉलरेट करने का क्षमता ज्यादा रहता है उसके वजह से। तो ये तो मटेरियल साइंस तो स्पेस सैटेलाइट्स का तो है ही अलग, उसका तो लेवल ही अलग है, क्योंकि उसका जो इंजन है वहां पर ड्रोन एयर पे काम करता है। ड्रोन आपको अगर मान लो 13,000 14,000 फीट 14 15 18,000 फीट के बाद में ड्रोन कभी उड़ा ही नहीं। 18,000 फीट से ज्यादा ड्रोन कभी उड़ा ही नहीं। लद्दाख में ड्रोन्स बॉन्वी कंपनी का हो, बॉन्वी कंपनी का लॉजिस्टिक ड्रोन से, आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 18,000 फीट हाइट विथ 59 kg पेलोड। दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये तो 18,000 फीट इज नथिंग फॉर स्पेस ऑफ द सैटेलाइट्स। 18,000 फीट, हम लोग तो 18,000 किलोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं। तो ड्रोन्स 18,000 फीट में जाने के बाद में क्या होता है, उसका जो एयर हो जाता है लद्दाख में, जो लेह रीजन में जो हमारा इंडियन आर्मी के जवान है, उसके पास में जो सब्जी वगैरह लॉजिस्टिक ड्रोन यूज किया जाता है, वो सारा चीज उठा के लेके जाता है। तो जो एयर थीन हो जाता है, उसके वजह से ड्रोन इनबैलेंस होता है। थीन एयर के वजह से ड्रोन इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। और हम उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं जो जगह पे एटमोस्फेयर ही नहीं है। तो प्लाज्मा बेस्ड इंजन, तो प्लाज्मा बेस्ड इंजन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके इंजन का चीजें ही ऐसा है बनाना। टेक्नोलॉजी में तो सिमिलैरिटीज इज द एरोनॉटिक्स इज द सिमिलैरिटी, लेकिन जो उसके एवियोनिक्स है उसमें काफी काफी चेंजेस है, डिफरेंस। यहाँ ठीक पे है, हम कू बैंड और क्या बैंड में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे जो जी सेट सैटेलाइट में हम कू बैंड में और क्या बैंड में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हाँ, उसी टेक्नोलॉजी को हम ड्रोन में यूज कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में कॉमनैलिटीज है, काफी कॉमनैलिटीज है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ड्रोन्स में और इसमें काफी कॉमनैलिटीज है। खाली ड्रोन्स में और इसमें एक ही चीज है कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट वाला सैटेलाइट है, जो मियो एंड जियो का नहीं, लोअर अर्थ ऑर्बिट वाला सैटेलाइट है, उसका जो मूवमेंट है बहुत काफी फास्ट है। जैसे बोला कि 40 किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या नहीं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, नॉट प्रति मिनट, प्रति सेकंड। तो उस समय पे जो कम्युनिकेशन होता है उसका थोड़ा सा, दैट इज द ट्रिकी पॉइंट। अदरवाइज ड्रोन तो कभी इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि इतना स्पीड में कभी जाए। तो दैट वाज द ओनली पॉइंट ऑफ चैलेंज इन द कम्युनिकेशन। अदरवाइज कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट के लिए यूज होता है वो ड्रोन्स के लिए यूज होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं।
और जो सैटेलाइट में डाटा चोरी होता है वो ड्रोन्स में भी चोरी होता है, और हमारा ड्रोन्स को भी पाकिस्तान हाईजैक कर लेता है और हाईजैक करके डाल देता है वहाँ पे। इसलिए आज के टाइम पे माइक्रो ब्लास्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि जब भी कोई इसको हाईजैक करेगा तो छोटा छोटा माइक्रो ब्लास्ट होगा और सारा कंपोनेंट्स में वो कंपोनेंट्स जल जाएगा। तो जिसके बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। एंड कम्युनिकेशंस के बारे में मेरा कल एक टॉक है ऑन दिस प्लेटफॉर्म, that I will be discussing about the GPS navigation denied platform। कि जैसे ड्रोन्स है, ड्रोन्स में कम्युनिकेशंस जो था ट्रेडिशनल कम्युनिकेशंस आज बहुत चैलेंज्ड हो गया है कि जीपीएस हम नेविगेशन को जीपीएस के साथ में टर्मिनोलॉजी में चेंज कर देते हैं। हम बोलते हैं कि जीपीएस मतलब नेविगेशन मतलब जीपीएस, but जीपीएस मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स, दे गिव अस द नेविगेशन। तो that group of satellites has been deployed by the Department of Defense of US government। और कभी ट्रम्प के जैसा कोई आदमी आ जाता है, जब हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, उसका कोई गारंटी नहीं रहता। वैसा परिस्थिति में जीपीएस स्पूफिंग इज अ चैलेंज। जीपीएस हमको डिनाइड हो सकता है, जीपीएस हमको स्पूफ कर दिया जा सकता है कि हमको गलत लाइट लॉन्ग बता दिया गया। तो वैसा परिस्थिति में ड्रोन्स कैसे काम करेगा एंड ड्रोन्स अंडरग्राउंड कैसा काम करेगा, तो वो सब चीज के लिए भी काफी सारा रिसर्च हो रहा है। इसमें भी कंप्यूटर साइंस का भी अवदान होना चाहिए। आज के समय पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस का जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, स्टूडेंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कभी भी सोच रहे हैं कि जो कंप्यूटर हमारा सामने में है, जिस कंप्यूटर में भी बात कर रहा हूँ, यही है कंप्यूटर। लेकिन जो कंप्यूटर सैटेलाइट के अंदर में है, ड्रोन के अंदर में है, रॉकेट के अंदर, लॉन्च व्हीकल के अंदर में है, वो हमारा कंप्यूटर नहीं है, वो उनका कंप्यूटर है। अरे कैसे हो सकता है? उसके अंदर पे सीपीयू है, उसके अंदर पे रैम है, उसके अंदर पे कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसके अंदर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर पे वो सारा चीज है जो हमारे रेगुलर कंप्यूटर पे है। तो वो प्रोग्राम कैसे हमारा नहीं हुआ? वही तो कंप्यूटर साइंस का ही हुआ ना, तो थोड़ी ना रॉकेट साइंस का हो गया। रॉकेट साइंस का बात आपने बोले सोलर पैनल का क्वालिटी, रॉकेट फिजिक्स का बारे में आपने बोले जब उसके मैन्यूवरिंग कैपेसिटी, ये सब एरोनॉटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस सॉरी फिजिक्स के बारे में आता है। लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम है, जो एक्चुएटर और सेंसर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो तो हमारा है ना, वो तो हमारा डोमेन का है ना। तो बेसिकली जहां जहां बाइनरी है वो सब हमारा है। ये सोच के हम आगे बढ़ेंगे। और राइट नाउ इंडिया इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री। जब कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में उठता है, हम उसमें बह जाते हैं। एआई हुआ, बह गए। चैट जीपीटी हुआ, बह गए उसमें। लेकिन हम खुद से कुछ बनाने के करीब कभी नहीं सोचते। 10 आदमी एग्जाम्पल देंगे तब जाकर हम उठेंगे। तो माई पॉइंट इज दैट कि बहुत दिन हो गए जिस स्पेस और डिफेंस को हमने हेवी कैपेक्स सोच के रखा था, सरकार ने उसको रेंट में देना शुरू किया। क्लाउड कंप्यूटिंग में वो आज सर्विस अवेलेबल होना शुरू हुआ। आपका क्रेडिट कार्ड में अगर 2000 रुपये है तो आप सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन कर पाओगे, ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास में रहा। अभी अगर हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, और ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, बड़ा बड़ा बात है, कभी रॉकेट होगा नहीं, हम कभी कर नहीं पाएंगे, ऐसा सोचेंगे तो शायद हम अपना जो मतलब एक बहुत सालों में 50 साल में जो एक बार अपॉर्चुनिटी आता है उसको ग्रैब नहीं करते। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस और विल गुड क्विट? Thank you, sir. Okay, There will be no question. Thank you. We'll have another session with you, sir, tomorrow. Thank you, sir. thank you. Within 5 minutes, we will start our next session. Kosik sir with you will ask. Just a 2-minute gap. Will be again with you. Good evening, sir. We heartily welcome you again to our AICT approved Atal online FD program. Sir will deliver today the demonstration of drone communication system. Sir, if you want to continue, please carry on.
Thank you. Thank you, Priya sir. Good evening, everybody. Good evening, sir. That was a nice talk by Professor Mohanty. I was, for last half an hour, I was listening to him, and so many very good advancement regarding that communication, also that satellite, rocket science he has already discussed. And this session will focus the most vital part, how to control a drone, unmanned aerial system. There is nobody on board. So how to control a drone? How that drone will follow our target, or how that drone will fulfill our objective for which that is developed, and the application for which it has been developed. So long as it is a aerial system, so it is not feasible to communicate with it through wire system. Obviously, we have to put a wireless system. Here, I am just sharing the screen. Is it visible and audible? Yes, sir. Okay, fine. Here I am showing one of the drone which we have developed in our lab. So many drones are there, but this is one of the most good application based drone that we have developed. And this is the side view and this is the frontal view, and the structure is based upon your carbon fiber body. The drone has been developed under one proof of concept which was sponsored by Ministry of Electronics and Information Technology. And basically we have focused how to eliminate, how to repel the locust swarm. Locust swarm is just like a pest which is there in the crops, and it perhaps before 10 years and before 5 years also we have come across this locust swarm. Sometimes they come from Afghanistan and they attack our crops, paddy or any other types of crops, and it just damage the crops within a night. And so many growth of this creature is at rapid fast that it is not possible for human being to control. So it is basically a ultrasound based repeller for locust swarm, to which frequency the locust swarm is very much susceptible. That means it is the frequency is irritatable, that we have developed through a different kinds of circuit. That is a from a square wave we have generated that frequency, and it is almost within that ultrasound, and the frequency may be a variable one, and the nature also we may vary, and it is not always for only locust swarm. We may apply this one for different kinds of pests also. So another drone we have developed here, that is your VTOL, vertically takeoff and landing. This drone is basically for defense sector, and the purpose right now we are not discussing more regarding this drone, and we have to keep this drone the developments for some purpose. So let me discuss how to communicate with a unmanned aerial system. After developing all these systems, how to control for navigation, for let us say for achieving a particular objective, how to get the ultimate result. That is our primary objective.
So drone communication, if you say, is the wireless exchange of data between unmanned aerial vehicles and other systems, such as ground stations, operators, and other drones. Sometimes what happens, one drone controls another drone. And this is essential for transmitting control commands, sending telemetry and sensor data, and streaming video or other payload information. And fully, this is a radio frequency communication, two-way communication system, and it may depends upon your direct radio frequency from the transmitter to receiver. Sometimes we may design our communication system based upon your cellular networks, or we may depend upon the satellite links also. Right now, Professor Mohanty was talking about satellites. Now, he has already discussed some point regarding the GPS systems also. Whenever there is a drone, we always talk about GPS because GPS helps us to navigate your drone. It provides the longitude, latitude. For example, if I put a simple example in front of you, the drone is capable of returning to its home location. How it is possible? Because when it takes up, it automatically records its longitude, latitude inside its flight recorder. And when it gets the command to return back to its initial home position, again it follows some of the shortest path to get that previous longitude, latitude. So ultimately, how it is guided? Through GPS, through satellite also. Now the question is, if a drone is associated or it is linked with some longitude, latitude, then it is possible to track it. Nowadays, the technology has been developed to such an extent that without the longitude, latitude, or without the help of satellite also, it is possible to control a drone. Now, mark, the ground control station and the drone is there, and there is a bidirectional communication. Are you getting it? Now, there is a payload data that is known as data link, and we put some commands that is known as uplink. But it is always a bidirectional one. For example, if I say this is the transmitter, and we just keep it in our hand. But what sort of things is there inside it? Along with that transmitting frequency, some codes, obviously. And how many controls are there? And how many controls are there on board? Because the artificial intelligence which is there on board is getting some command from the ground control station, obviously. But according to that, the intelligence is more capable than controlling it through its flight controller. I have already told you the Kalman filter, which is the heart of the flight controller, has so much intelligent things that it finds all the sensors, actuators, input, and it finds the logic how to control the speed of every motors. Here I am showing another figure for the receiver, which should be put on board. Now mark here. Battery. This is the transmitter I am showing you in my hand. Okay. Another type of communication system for drone is this one. This is known as telemetry, and the corresponding antennas are there. For wireless communication, these are very much essential parts for a drone, whether this type of transmitter receiver combinations or telemetry.
Now let us discuss what is our objective, how to communicate with a drone, what are the most possible way how to contact with a particular drone through other drones or through ground station. There are many ways. Through satellite also we may control a drone. Through directly ground station, we may put some command from the ground station itself directly to control a drone, or we may first, let us say, put some command towards a particular drone and it will control several other drones. So air to air link, sometimes it is also required. Now, what are the key aspects of drone communication? Command and control, which allows for real-time remote operation of the drone, including commands. For what purpose? For navigation, altitude, and other flight functions. What other things are required? Data transmission. For what purpose? Transmits the data from the drones, sensors. Sometimes the data are required from the cameras. Sometimes the data are required from the GPS to find out its location. That means the longitude, latitude at which it is present. Sometimes it means if it is not line of sight, it is not present in line of sight, then we have to find out through GPS. This includes live video, sometimes telemetry. Telemetry already I have shown you. Provides real-time feedback on the drone status, such as its location, altitude, speed, and battery life. Range and mediums. Uses variety of communication mediums. Medium means how it is possible. Radio frequency. We all we know about the radio frequency of 2.4 gigahertz in our daily life. It is widely used for different application, whether it is Bluetooth or the wireless Wi-Fi network. So this is a very good frequency band, and we may use this 2.4 gigahertz frequency for the radio frequency. That means for our transmitter receiver for drone application also. Also, nowadays, 5.8 gigahertz transmitter receiver pairs are also there, and it is having very good high range also for drone controls. That means for having communications with the drones. Another medium is satellite communication, SATCOM. It provides global coverage for long range missions. For example, suppose your radio frequency range is 5 km. Now, how to control a drone beyond 5 km? Let us say our Earth's surface is a curved one. Sometimes what happens for radio frequency, there may be some obstacles or there may be some restrictions after some distance. Let us say after 500 kilometer, 200 kilometer, how to control a satellite? So for that reason, we have to take the help of the satellite. Through satellite also, the communication is possible. Next is cellular networks, just like your mobile. Wherever you go, you are having the networks nowadays. So using that 5G network that is already there, we are using the drones to control or to communicate with a particular drone. We take the advantage of cellular network also. So communication mediums may be radio frequency, satellite, or cellular networks. Now drone to drone communication, another medium. For example, one drone acts as a mediator with the ground station. Now from the mediator drone, another drone is communicated and the command is there for the mediator drone, but the objective is that to control the second drone. The mediator drone acts as a repeater. You may say the ground station feeds the command to the first drone, the mediator drone, and that drone controls the other drone. So all these types of facilities are the developments are there for communication systems with a particular control system for the drone. And from the point of security, advanced systems
use encrypted channels to secure data exchange between the drone and ground systems. Obviously, unless until there is a security for all these communications, suppose for enemy country, if you are using your drone and at the same time it is possible to control by the enemy country, then it is of no use. So we have to encrypt the systems for communications as well as for our drone. And the AI helps us to communicate with a particular encrypted systems, and so many encrypted datas are there, pseudo random techniques and different spread spectrum techniques are there. From time to time we may generate different types of coding systems which cannot be traced. Now this is the block diagram. Communication module, Mabling. Generally for UAS systems we use Mabling module, guidance and formation next module, and autopilot. And at the ground station, what happens? Communication module, Mabling module, and mission management. On board, communication modules, Mabling module, and guidance formation module, and autopilot. That is inside that your flight control is available. And here is a mesh technique. If you say, so many drones are there and they are serving different areas, and we are communicating from a single ground stations, and according to our different purpose, we are performing our jobs to solve our problems. So this is also possible through ground station. Now let us talk about the UAV communication requirements. Unless until we know the communication requirements, it may not be possible to integrate the advanced intelligent systems with the communications. That means, for example, nowadays there are a lot of drones in the sky. We have come across recently the war was there. At a time, within let us say 10 minutes, 50 drones are there, and so many missile counter attack is there. So how to guide our drones in presence of counter drones, counter missiles? The intelligent drones are capable of avoiding that missiles. Sometimes what happens, let us say for another application, the unmanned aerial system must follow a predefined waypoints. Within that waypoint, suppose some obstacles are there, some buildings, high-rise buildings are there. So from the ground station, you are putting the command towards your drone, but the drone finds some high-rise buildings in its path. During that period, it will take its own decision. The intelligent drone is capable of providing so many intelligent paths, and it has to take one of the path for the next unavoided or avoid that obstacle, and it will follow that path. So let me discuss what are the requirements. The real-time control, obviously the real-time control is very much required. Telemetry, video streaming. For so many applications we just put cameras, whether it is thermal cameras, lidar cameras, or RGB cameras. Less or more, every unmanned aerial systems are having cameras. For example, let us say for agriculture, so it has to process the image to monitor the health of the crops. So we have to put a camera. So video streaming is equally required. So here is another communication system we have to put. First, we have to control the UAV. That's why we have to put a transmitter receiver or your telemetry. Second, we have to put another system for video streaming. What is that one? Video streaming means the real image, video clippings we have to process. That is again required. So for that, another transmitter receiver is required. And the
transmission must be a reliable. Latency, lagging effect also plays a vital role. If the lagging is very low, then it will provide very high accurate real time control system, as well as suppose video streaming is there, then it will provide very low lagging video output. Obviously the range is always there for your control system. If the range is more, the control system is very good. If the range is less for your transmitter and receiver, then the control system obviously hampered. So keeping all these points in our mind, that means the requirements, we have to develop different kinds of transmission systems. Here, how many types of drone communication systems are there? I have discussed. One is line of sight, another beyond line of sight, another is satellite based, another is mesh network. Less or more satellite based is understood. Line of sight always it is possible because the transmission is very good, but beyond line of sight we have to depend upon the screen. That means we have to get the videos of our camera from the drone which is installed upon that UAV. So from that we have to find out so many solutions, whether it should move leftward, rightward, or the communication, how much battery is there, how much left out battery is there. So we have many things to find out from the screen. And mesh networks obviously depends upon the number of drones which makes the mesh, and depending upon that we have to go through this kind of scenario. Let us think about this system. The UAV is there. We may put the radio signal from the ground control system directly towards your unmanned aerial vehicle. Otherwise, we have to put the radio signal towards your satellite, and from satellite it will be reflected back to your UAV. And always it is a bidirectional communication systems. Otherwise, let us say we are using the cellular network, then what is the solution? We have to put the control signals towards your 5G, let us say 5G network, and from the 5G network station, or you may say the tower, it is provided from that tower towards your UAV. And again it is a bidirectional communication system, because we have to get the health of your drone also, the many things, many datas. Suppose sometimes the videos, sometimes the photographs, sometimes the other types of data which are transmitted, and from that we have to proceed further. Let us say there is a tank in the battlefield. Then after getting the image, after processing that image, we have to proceed further. That means we have to strike a missile towards that tank. Then all sort of things are bidirectional. The communication system, whenever there is for any unmanned aerial vehicle, is always a bidirectional, not unidirectional, remember. If it is like that, then we have to again develop very good types of antennas. Remember this point also we will discuss after some time. Okay, let me have some amount of water. Okay, what is a ground control station and what is there for a ground control station? UAV ground control station is a land or sea based control center that provides the facilities for human control of unmanned aerial vehicles, or we may say drones. So ground station provides all the facilities for human control. For what? For unmanned aerial vehicle. So what are the main functions? It should provide some command. It should provide the mission planning and the telemetry. Telemetry means both where the data communication should be provided. So sometimes we find very robust kind of
suppose laptops or sometimes the handheld transmitters with sophisticated displays. All these things are there because it should be a weatherproof systems. Suppose for defense, there must not be any, let us say, any room or like that in the battlefield. They have to carry on the control station with them. So it is just like a suitcase and they have to take it along with them. So let me discuss what should be the command from a ground control systems. The communication is like that. A drone command can refer to a pilot input commands like throttle, pitch, roll, and yaw. Already we have discussed in the last discussion what do you mean by throttle, pitch, and roll and yaw. And I think this is not required for this time to explain what is pitch, roll, and yaw, because with respect to x, y, and z axis, we call it pitch, roll, and yaw motion. And throttle is nothing but your movement in a vertical manner. The vertical manner, that means it will move towards your earth surface or it will move towards your sky. So that is known as pitch. All these four motions are generally with you. That means from the ground station, the person who is taking the advantage of controlling a drone is always controls all these four motions first of all. But there are many things where human being is not capable of taking any decisions. So that is there inside that flight controller intelligence. So that intelligence is capable of taking very instant, accurate actions without the intervening of the human command. Remember, it can refer to a specific instruction given to the drone's flight controller, such as an automated takeoff, hover, or emergency stop command. So sometimes what happens, manually, we have to take the command. For what purpose? To interact or to stop the automated action of a flight controller. So for that, we have to take the emergency commands. Sometimes commands are processed by the flight controller. The drone's brain, which is known as drone's brain, which uses data from sensors to translate these commands into the actions for the motors. Drone mission planning is the process of defining mission objectives. Here, we have come across there must be some mission planning. So what is that mission planning? That means deciding a path, putting a target, or putting some job for the drone to be completed. Yes. Drone mission planning is the process of defining mission objectives, selecting appropriate drone and sensor configurations, and creating an automated flight path using software to achieve specific data collections, goals like photogrammetry or inspection. This involves setting waypoints. Waypoint setting means you have to predefine the path. That predefined path is always, remember, we have to set. Suppose in autonomous mode, we have to set the waypoints. Then flight parameters such as altitude and overlap, sometimes considering the safety factors like terrain and weather and obtaining necessary authorizations for control the airspace. The plan is then uploaded to the drone to execute autonomous flights for various applications. I will show you that features through some softwares. After completion of this discussion, we will find some practical things how to get that knowledge regarding the control systems from the ground station through some particular softwares, and the communication systems, how it is established from a ground station. We will have some that demo through the particular software. Okay, plan the flight path. There is a software, flight software. Use mission planning software to design the drone's trajectory, waypoints, and grid patterns. Create a route with waypoints or a grid pattern for complete coverage of the area. Next, flight parameters. To adjust the settings for flight altitude, speed, camera tilt. That means along with that camera, there are some
gimbals arrangement, mechanical movement arrangements are there. And that movement is sometimes three-dimensional or two-dimensional, and image overlap to meet the data resolution requirements is fulfilled sometimes through some zoom arrangements for the camera also. And terrain following, enable terrain following in a rough areas to ensure the drones maintains a safe distance from the ground. And it is also obviously automatically collect and transmit real data from the drone to the operator's ground control station. For what purpose? For monitoring of flight status. Second, to monitor the system health. Third, to monitor the environmental condition. So these are the real parameters which are generally required for the ground control stations. And it is provided by the onboard transmitter which is there on the drone, we may say. So it is a bi-directional things. This data stream is crucial for safe and efficient operation as it provides the live insights into position, altitude, speed and battery life, while also enabling the remote diagnostics and control. Now I have already shown you this type of telemetry systems are there, transmitter, receiver. Let me switch over to that practical things. Here I am having transmitter and receivers for telemetry, and it is connected with its antenna like this. Okay, and one should be connected, let us say these are the two things in my hand. One is transmitter, another is receiver. Okay, are you getting me? One is transmitter, another is receiver. So one should be connected with the ground control station system. That means whether it is a PC, whether it is a laptop, and another receiver, it has to be put on the board. On board means on the drone. So it is a bi-directional communication system, and for monitoring the health, monitoring the battery, monitoring the position of the drone. So trans receiver, the word is there because both of it are transmitter and receivers are present inside this thing, and antennas are obviously there. Now let us talk about the data link types. There are if you say there are three types of data links: control links, payload links, and redundancy links. And less or more we have to go through it, but sufficient time is not there. But for what purpose we have to develop our artificial intelligence, that depends upon all these requirements. That's why I have included all these things. And regarding the frequency band, already I have discussed 2.4 gigahertz or 5.8 gigahertz transmission frequency range or bandwidth is allowed for your drones, and that depends upon the country also, their authority also, and the particular body which controls the drone flying systems. For example, in our country, DGCA, Directorate General of Civil Aviation, which controls the airport authority also. We have to abide by the rules by the DGCA. What are the bandwidths for transmission, for control systems, for our unmanned aerial vehicles, and they are the deciding authority which they provide the complete rules and regulation for drone also. Other than that, 2.4 gigahertz, 5.8 gigahertz, 900 megahertz frequency we may use for our communication systems. And here is a comparison between the range and bandwidth. If you
move towards your 2G to 5G, then what should be the bandwidth you may imagine from this graph. And Bluetooth, Zigbee also you may take the help, but it is not always advisable, because we have to sometimes depends upon the transmitter receiver which are designed by the manufacturers. We have to design our own systems so that we may have some secrecy for our communication systems. And another communication system which is required for video or still photographs, that we need for image processing, whether it is for weather forecasting, for any particular, so let us say for firefighting of a let us say inside a forest, or the fire is there for a high-rise building, or sometimes health monitoring of a high-rise structure, or any electrical systems, high voltage systems are there. So for that we need that picture or the video to be transmitted by our unmanned aerial vehicles. And for that also we need different kinds of communication systems, or you may utilize any of the radio frequency band which are allotted for our drone particular application. Now another that we have discussed about satellite communication little bit before. Mohanty sir has already discussed regarding different rocket system, satellite system to some extent, and we are actually taking the help of LEO or MEO satellites for drone applications, communications, or command, or for you may say to control the drones also. So LEO, the low Earth orbit satellites, the altitude is within that 500 to 1500 kilometer, and the speed is very fast, up to 17,500 miles per hour, and orbital period is 10 to 40 minutes. It provides the lowest latency because it is the closest orbit to Earth, and satellites moves very quickly and pass over a ground station in a few minutes. So you may take the LEO satellite for your drone communication application also. And another is MEO, medium Earth orbit, whose altitude is 5,000 to 12,000 kilometer, little bit higher and slower than LEO, 7,000 miles per hour. Orbital period is 2 to 8 hours, and it balances the low latency of LEO with the reduced number of satellites needed for coverage. It requires fewer satellites than LEO to provide the same coverage area. For example, 50 MEO satellites can cover the same area as 100 LEO satellites. Satellites move slower but still require steerable beams to maintain service over areas, and common uses are land surveying, some high-speed data communication. All these things are there. Just a minute, let me have some water. Is there any doubt or any questions from the participant side? You may raise any doubt. Particularly this communication between your ground control station and unmanned aerial system or vehicle is a part of electronics people. Electronics engineering, or the engineers are required to develop new kinds of communication systems. For example, I am having this transmitter. We are just telling the transmitter is there, but what is the modulation inside this? Whether it is amplitude modulation, frequency shifting modulation, amplitude shifting modulation, or any type of other modulation we are adapting for controlling our drone or to communicate with a drone, that is very much required. For this type of transmitter, generally automatic frequency hopping digital systems are there. It is a protocol which is developed by FlySky, and its radio controlled RC equipment. They are manufacturing with this, following these automatic frequency hopping digital systems.
It is used to create a secure and stable wireless connection between a transmitter and a receiver for controlling RC models like drones, planes, and different kinds of robotics applications also. There had been several generations of the automatic frequency hopping digital systems also. The AFSD is the original unidirectional protocol is meant that data was sent only from the transmitter to the receiver to control the model. But this type of transmitter nowadays very much popular among young generations, and this is the initial level of communication systems for all the drones or the unmanned aerial system generally they develop. After that they may have to switch over to any other types of modulation technique. The primary objective is that it consumes very low power. Also the digital authentication is very high accurate. Okay, let us proceed a little bit more. Mabling deep drive. Mabling is a protocol which is generally used for our drone systems, drone communication systems, and we will discuss about after some time this thing also. And regarding the security, if you say we just follow the packet structure for our security also, how much time is left? Let me check, because after that we are having some practical regarding with the help of some software also. And regarding the antennas, and always the antenna plays a vital role for any communication system, so long as it is not possible to put a very high length antenna upon a flying object, whether it is a aircraft or whether it is a flying object, just like your drone, quadcopter, or fixed wing drone, or VTOL. So it is always advisable to adopt very high frequency for communication so that your antenna length will be very less. For example, there is a very well established relation between your wavelength and frequency. C equals to F lambda. So light velocity, nothing but your multiplication of frequency and the wavelength. So whenever you want to decide the length of the antenna, it depends upon the wavelength also. So more the frequency, the length is very less for your antenna, because lambda is always associated with the antenna length also. The physics is behind that, and we have well established mathematical portion for that also. So without bothering about that, what sort of different types of antennas we have developed for our communication systems for radio frequency transmission, that we have to follow for our drone systems also. So without bothering about that much thing, so there are omnidirectional antenna, directional antenna, phased array, and coverage antennas also there. Now here is the antenna types for which we have to develop the radiation pattern. Now think about a drone, and drone radiates just like a spherical manner. That means the transmission should be towards every direction. So the transmission is equally important for every direction, because nobody knows where you are present and you are controlling your drone. So the antennas radiation should be in a spherical manner, and here it is shown through some simulation also. And the antennas types should be omnidirectional, and the radiation lobes, you may say, through microwave radiation softwares we have already discussed. So many things are there, and the radiation pattern we have observed. All these things they have to develop for your microwaves peoples, and they have to develop very good quality of antennas along with some protocols, so that the radiation control systems will be very easier for the ground control stations. Now the advanced data links. There are two networks here I will discuss. One is mesh networking, another is LTE and 5G integration, long-term evolution and 5G integration. Now this type of integration, in the left side figure I have shown one mesh networking where so many drones are there, and their
in communicating with each other. They are in bond with each other, we may say, and they are getting the data from the target also, sometimes from the mobile, some other vehicles, and some aircrafts also, and they are fulfilling their application for which they are developed. Here at the right side, some networks towers we are observing, by which it is possible to control a particular drone, or we may say it is a bidirectional communication systems, where the drone is also providing sometimes of data for our, let us say we are putting for our repeater purpose. For example, it is a mediator which communicate with each of these three towers. That means it is uh, a problem solver for a range finding purpose for which we have put there. That means for 5G network, it is also a possible to get a repeater, just like a unmanned aerial vehicle. If you put on the sky, and it will transmit according to your need your data towards any particular mobile switching center. That mobile switching center will divert that data towards your destination. That means, let us say I want to talk with a person and who is situated at tower number 1, but it is not possible to get the data from me to tower number 1 directly, but it is diverted towards your drone, and then that drone is capable of providing the data towards tower number 1. So it is also possible. And if you talk about the control system also, you may control through some towers 5G networks also, it is also possible. Now let us discuss about some of the drone communication softwares. I will demonstrate some of the softwares right now, and how to control a drone. That is a practical things. Unless until we connected practical means unmanned aerial system with our software, it is not possible. If it is possible, on last day I will show again that demonstration for 5 to 10 minutes after connecting a practical drone with this software. Now today, so long as it is a faculty development program, it is not sufficient to have so many slots. So it is not possible. It is a very vast field how to communicate through this Q ground and mission planner software. Still now, we have discussed about different protocols, different aspect, features, requirements regarding the communication with respect to your drone. Now we are talking about the communication softwares by which it is possible to control a drone or from the ground station. So this is, I am having 2 or 3 softwares right now in front of you. I'll show some of the demos. Here, the Q ground software already I have installed in my system. Is it visible, the software? Yes, sir. Yes. Okay. This is the Q ground front end, and through this software, it is possible to communicate with your unmanned aerial system. Now, what is the software? Q ground. Other than that, also we are having mission planner software. So also I have installed it. Is not possible to show you how to install it by downloading from the Google Chrome. So it is very easy. But what are the features inside it? Less or more, I will discuss here how to communicate with a particular drone. That is our point of discussion right now. Let me show another software. That is your INAV software. Is it visible? This is a flight controller in my hand. I am just right now demonstrating how to connect this flight control. Let us think this flight control is upon a drone. Now, after connecting this drone, let us say the flight controller is connected with our drone's system.
Now drone is communicating through telemetry or transmitter receiver with the ground station. So let me connect right now with a USB data cable. Just a minute. Yes, I have already connected. Are you getting it? In my hand, there is a flight controller. I have connected with a data cable to my ground control station. That means to my system. Now, in the INAV software, how it is possible to control and what sort of things are there to try to get it? Is it visible? The INAV software? Here are some of the Yes, sir. Yes. options are there. Mission control, hardware flasher. Okay. Now I have to first of all connect this one. Let me connect again. I have to select the port first of all and select the baud rate. So right now it is not connected with my system. There is some link failure. Anyhow, I will manage to show you. These are some time taking procedure when you want to establish the link. Yes, it is get connected. Is it visible right now? Are you getting the operation? Yes, sir. Yes, sir. Now my flight controller has been connected with the ground control systems. Okay. Now whenever inside this flight controller, three sensors are there. Which sensors are present? I am just showing you. Let us say the gyro is there. So whenever the orientation is different, automatically it gets reflected towards my system. So I should get the feedback from the unmanned aerial system. So here are calibration through this software. It is possible to
get the calibration for my drone. So many procedures are there. It is a very time taking procedure. Anyhow, I am showing some of the features. Yes, here is the sensor output. Are you getting the? If I put the flight controller on a plane surface without disturbing it, the 3-axis accelerometer I have chosen here. So accelerometer output is almost stable. If I change the position of my flight controller, automatically I am getting the result. So the drone needs to be stabilized. So who will stabilize that one? The flight controller embedded program. So ultimately that intelligence is there, but from the ground station, it is not right now possible. Now, along with the accelerometer input, if you want more than that, that means possibly you want to move any particular direction, then it has to take into account that command from the ground station. Let us say I am deselecting this accelerometer and I am selecting magnetometer, but magnetometer is not present inside this flight controller because different flight controls are having different kinds of sensor. Inside this accelerometer is there. Now gyro is there. If I change the orientation of this flight controller, I am just moving in my hand. It may or may not be possible. Is it possible I am changing the flight controls orientation? That's why I am getting the different kinds of waveforms. That means always the sensors are of 3-axis based. So this is 3-axis based gyroscope. So the changes in the curves are there. Another is barometer. Barometer is also there inside this tiny flight controller. So if I change the altitude, automatically you will find the pressure changes. The barometer's pressures, altitude is here, barometer readings is here. If I change the altitude, automatically the graph is changing its nature. That means it is indicating the data is different for different altitudes. So how to get these information? Why it is required? Because all these data are equally important for the ground station. All these informations are equally important for the flight controller. How it will know? There is a very heavy pressure of or wind pressure. So we have to put so many sensors. Along with all these sensors input, the flight controller has to take the decisions. So where is the requirement of artificial intelligence? You try to get it. We have to develop the flight controller in a you may say different way, so that it should be very much stabilized for pressure change, altitude change, you may say. Suppose there is a sudden wind, to divert its course or the path, it should not be. So we have to take into account all these things. Now, if I say receiver, so inside this roll, pitch, yaw, throttle, all these controls are there for different operations. Let us say I have to interconnect the channels of every channel should have some commands towards your unmanned aerial vehicle. So ultimately the frequency may be same, may not be same. Let us say the frequency is 2.4 gigahertz. Then I have to encrypt the frequency with another type of data, so that that particular channel will be activated and it should operate that one. Let us say it has to operate a clutch of a drone. That means that drone has kept that missile inside its clutch and the clutch should open. So from the ground control station, we have to operate the missile. Are you getting me? So that communication system must be equally
capable of doing both way communication. For that, all these receivers means calibration is required through your software from the ground station itself. Sometimes we need mission control. Mission control means we have to provide the navigations predefined one. That means just like your Google map. Upon a Google map, what happens? For example, let us say Ola or Uber or Rapido. We just find out where is our ride, from where to where we have to go. So it automatically navigates. Just like that, you have to put your navigation system for your unmanned aerial systems. All these things are there. Here is a black box. The system is a little bit slower. Yes, here is a black box. So black box inside a flight controller records all the datas. Every datas are there, just like inside a cockpit of a flight or an aircraft. It has to record all the datas also. You may go through it if you are having some interest upon this one. So this type of, these are open source softwares. Basically, these are open source softwares, and some predefined paths we may put upon here, and through mission control, we may have some extra command. Otherwise, autonomously, it will follow that mission control flight path, and it will follow that one and complete that one. It will obviously fulfill our target. Yes. Another is fail-safe. What does it mean? Fail-safe means what? For example, how to control this one? How to get the communication system to be predefined for a fail-safe mode? Fail-safe mode, for example, let us say you are driving your car and it is a automatic control car. When it finds some hump, automatically the braking system is applied and your car becomes slower. Just like that, in fail-safe mode for a unmanned aerial system, suppose the battery is 10% or 20% or 30%, depending upon that, the drone calculates how much time it will take to come back its own initial position. This is one simple example. Why? Because if the battery storage battery storage is below 10%, after some time it becomes 5%, 0%. What will happen? Your drone, which is driven by your power supply, is nothing but your battery. If it is drained fully, the drone will fall down, which is not required. Sometimes you need your drone to come back to your initial position. Suppose it is a suicidal drone, kamikaze drone. What will happen? It will fly and die. It will destroy itself. There is no need. But in case of that also, in fail-safe mode, whenever it gets its own target, it should follow the next step. It should strike or it should collide with the target. So all these things are there in fail-safe mode. Fail-safe means whenever there is a link failure with the communication system. Let us say, another example I am putting here. Let us say the drone goes beyond the range of the transmission. So what will happen? If you put your command towards your drone, the drone won't follow that one, because there is no communication between your drone and ground control system. So what will happen? The drone will move automatically towards its fail-safe mode. So inside fail-safe mode, we have to pre-program your drone in case of link failure, communication system link failure. It should move towards some intelligent programming system. That means whether it should get down at that particular position, or it should move towards its initial position, or it should decrease its altitude. Let us say it is flying at 1000 kilometer altitude. Now, when it moves towards fail-safe mode,
If you have programmed already in case of link failure, it should get down to 500 kilometer, or let us say 200 meter. So it will move down so that the atmospheric pressure will be less. Upon that propeller, the pressure will be more, and automatically the path will be less to come back to its initial position. So in fail-safe mode, there are several conditions for controlling purposes. Whenever there is a link failure, we may use this fail-safe mode. And different configurations are there, obviously. Accelerometer, magnetometer, all these configurations are there. And the copter, let us say in X version, H version, many communication systems are there. Now let me show you the GPS, the communication with the GPS. Current GPS locations, here it is, I am showing Galileo satellites, Beidou satellites, GLONASS from Russian. All these things you may link with your drones also. Anyhow, so this is less or more. I am disconnecting this INAV software with my flight controller. Less or more, it is not always feasible to get the complete knowledge within 15 or 10 minutes. But this type of things are there to control or to have some communication from your ground control system towards your unmanned aerial vehicle. I am showing right now another software which is there, and this is also a freeware system. That is your mission planner. Also, I have already installed this mission planner in my system, just like your QGround. QGround, mission planner are two popular softwares generally for communication with the drones or unmanned aerial systems we generally use. And mission planner is from one vendor, whereas QGround is from another vendor. So Pixak mission planner, yes, this is the autopilot mission planner is there, and for QGround, that is your Pixak QGround software is also there. You just try to find out. Let me check whether this flight controller is compatible with the autopilot mission planner or not, because I have picked one of the flight controller. Every flight controller is not compatible with all the softwares. Sometimes we have to find out from data manufacturer sheets for which flight controller we have to choose which softwares. So it is not compatible. Still then, I am just showing some of the features of all these. Here is a setup option. Install firmware. That means we have to configure our copters. We have to configure our copters according to its configuration, whether it is copter version, or whether it is hexacopter, quadcopter, or tricopter. All these configurations are there. You have to choose a particular configuration always. Then after choosing all these things, we have to proceed towards firmware. So sometimes all the latest firmwares are available for different configurations. We have to communicate with our drone. So unless until we update our firmware for our systems, it is not possible to get accuracy for our systems that we have to develop and we have to put for some particular applications. So many things are there, and in this software also the less or more the things are almost same for every software. Here for the settings of your transmitter and receiver,
Here you just mark. Joysticks are there, joystick setups. Similarly, many things are there. We have to generally take the help of all these options to have that control from the ground stations, and all these equally required. Before that, we have to calibrate each of these controls. For example, for our four-wheeler, what happens? We have to align our wheels in the garage. For what purpose? So that when you twist your or move your steering, accordingly your wheels should move. If you move 0 degree, then it should be in straight line, straight forward. If you move little bit, means if you move 1 degree your steering, then it should move 1 degree or 5 degree. How much is required? That must be calibrated one. So similarly, here the calibration is equally valid or equally important. And some of the simulations are there. You may go through it right now. My system is present here. So on the map, I am getting my system is here, and it is possible to locate my system. That means inside this, the GPS system has been activated. Sometimes what happens, we have to put external GPS for drones also or unmanned aerial system. So both the GPS systems should be calibrated prior to have some applications. Okay. Is there anybody having any curiosity or a doubt regarding communication systems? How I have already discussed to some extents the hardware part as well as the software part, which are there for ground stations and for onboard systems. Is there any discussion which is required for any participants? Any doubts? You may raise some questions also. Sir, in chat box, Mr. Satya Mahapatra have some doubt. Okay. Yeah, but is there Yes, any sir. option for? Sir, you can continue. Satya sir, continue. Hello, Satya sir. Are you having any doubt or you want to know something? Yes, sir. Sir, Please. I have the question. Sir, the Q, you are saying the Q software, INB software, and all these softwares. Is there any software secure communication protocol used or anything else that can decide the we are controlling the drone of our or other else? If you are using two control drones simultaneously, which of the drone is controlled? Can it is decide that which drone we are now controlling, or we need to control use two other two softwares or anything else? Okay. Sir, this is just like that. I am just putting one simple example to clarify your doubt. Let us say I am having one Bluetooth headset, and it has been paired with my mobile, and it is operated at 2.4 gigahertz. Are you getting me, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, also you have purchased another headset, Bluetooth headset, and it has been paired with your mobile. Now, both of us, just imagine we are listening our music simultaneously, but nobody is listening other party's music. Yes, sir. Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. But the practical thing is that both are using the 2.4 gigahertz frequency. It Yes, is encoded. Suppose I am using mission planner, somebody else who is sitting nearby me also, he is also using that mission planner. He is controlling his own drone. I am controlling my own drone. But yes. nobody can control others' drone, because the transmitter and the receiver, the communication system is established with the transmitter receiver ultimately. Mission control ultimately puts the signal upon the transmitter. Transmitter
finds a coding system. It is encrypted with some data. So that data pattern is always different from other transmitter. Just like your Bluetooth headset. Whenever we are pairing means it is generating some coding pattern to keep some secrecy with your particular mobile. It won't establish any communication with other mobile. This is a very simple things I am putting here to clarify your doubt. Similarly, if you want to develop your own software, if you let us say our supercomputer is our supercomputer for defense system, we may not put a supercomputer from other country for our defense purpose. That is always advisable. But still then, the secrecy is always there. Let us say this is a free version software, Mission Planner or Q Ground or your INAP softwares. Still then, there is no harm. Because whenever you are putting your communication system, you are adapting a transmitter receiver. So automatically your transmitter receiver is generating some encoding system, just like your pseudo random system. From time to time, frequency hopping may be there. So the transmitter always different means versions are available. That depends upon manufacturer. Right now, I am talking about a automatic frequency hopping digital system. It is a very highly sophisticated frequency hopping digital system. The digital pattern for encryption is very high, and it is a proprietary radio protocols developed by the FlySky. Okay, sir. Anything else? Sir, yes, sir. Is it also capable of controlling swarm concept, swarm drones like that? Very good, sir. For that, another software is required because simultaneously controlling many drones for your swarm application, it is required. But in Mission Planner, it is not possible. It is possible only for one or two drones, let us say. But in swarm application, we have to have another third party application generally during any, let us say, swarm application. Let us say for a event show, they have to put 5 to 6 systems, and they must be integrated with a common that is known as conference systems. If any drone is malfunctioning, automatically the program, the intelligence is like that. Another drone takes its own course and also maintains. If the system is damaged one, then it takes the position of that the previous one, if it is required. So that sort of things is there. Sir, another question I have, if no issue. Please, sir. Sir, also there is a concern about the drones in defense. It's a threat also, and we are employing the radar system and many more things to control that. Is it controlling? Is it detecting the drone is a small thing, and it can, in radar system it's just a point, single dot point. It look like a single dot point, and we are controlling the manage. We are able to manage the mass level system as an Operation Sindur. So can you please describe anything that help us that how they could able to manage all the swarm drones and other things Sir, I am just showing they one detect video and here destroy? right now. Is it visible, sir? Yes, I sir. am Yes, sir. just Yes, showing one video from YouTube right now. Okay. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. These type of drones are capable of moving inside the water. It can hide inside the water and it will move very accurately towards your. If you are talking about the defense, okay. Now, how it is Yes, sir. possible? Because the thing is that, just let me close this one. Close it. Because what
we are not aware of the technology or the development of a drone. They have already developed. For example, you are talking about the radar system. To your knowledge, sir, you will astonished. A Kamikaze drone at its nose, it has a very high accurate. I am just showing you the drone which is there uh, for Kamikaze. That radar inside it. Okay, drone. And what about your drone? Sorry, radar system at ground. Always the radar detects whether it is a aircraft or a drone. It takes equally importance or puts equal importance to your drone as well as your aircraft. Drones are more dangerous than your any fighter plane, to your knowledge. Nowadays, what happens? The war starts with drone, not the fighter plane. Whenever I am not getting that figure right now, perhaps or the right videos, I will show, or you may go through later. Uh, the drone always installed with radar system. The radars and the aerodynamic shape is like that. It should be hide from the ground station radar system. Even whenever there is a drone on the sky, the radar detects it, but some false type of signals are transmitted from the drone so that no anti-drone missile will strike it. If it follows the drone also, let us say it follows the drone, and the drone intelligence is so much intelligent that it will follow another path automatically to avoid that striking missile. We cannot imagine, sir, to such an extent they have developed all these unmanned aerial systems. Even navigation systems they have developed without the integration with the GPS system. Because once longitude latitude is logged by the missile, means anti-drone missile, so that drone will follow automatically that drone where it is flying. Time to time, it will change its longitude latitude, and that longitude latitude, whenever it is changed, the missile will also automatically change its longitude latitude, and it will strike or collide with the drone. It will destroy the drone. That sort of things they have developed, and very accurately. Very accurately, it is following the path also. So inside a radar, whether it is a spot or it is a very big spot, whether it is a fighter plane or whether it is a drone, a small drone, no matter it is, because it is always a target for the country defense system by the radar. So radar always provides the information that is the target. We have to destroy it to your anti-drone system or anti-fighter plane system. Am I clear to you, sir? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. Is there anybody? Are you having any doubt? Okay. Perhaps, Priya sir? Yes, sir. Uh, Any doubts from the participant? I think participants? no, sir. No doubt, sir. For swarm drone, there are many softwares, but always we prefer the licensed version softwares. You may search through net also for some software. Generally, these are commercial softwares, and the management companies they used to get these softwares from the third party with license.
and they generally use it. To my knowledge, I have not used any Swarm software till now because my field is something else. We have to develop different kinds of aerodynamics. Also, the softwares which are provided not for swarms. Generally, swarm softwares are very much popular among different kinds of people who handles the event management. Okay, any sort of questions? Okay, let me complete this session with this, Priya sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for this Thank depth you all the knowledge. participants and Priya sir, who have taken so much pain to conduct all these Sir, faculty you have development. taken so much pain. Actually, only because of you, this FDP will be continuing. You are Sir, the I am very only much fortunate. fundamental, Yes, fundamental yes. pillar of No, this no, FDP. sir, all the speakers I have already gone through for last half an hour. Yes, That sir. Yes. discussion of Professor Mahanti sir is very sincere. His talk, you just think how much knowledge he has shared with the participants. Yes, sir. Yes. So always we are attracted by the interest of the participants. So all are equally important for any faculty development program. Once upon a time, also right now, I am just attending all the faculty development program related to drone development, whether it is a IIT or NIT. So always knowledge is not a end point. So we have to develop ourselves and we have to share our knowledge with all other persons also. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks you once again for your sharing your time and expertise with us. Thank you. We are looking forward to your future collaboration if anything will happen. Thank you, sir. Sir. Happy Diwali from all the participants. Yes, yes. Happy Diwali to all the participants. Thank Thank you, you. participant, for your patience. We will be there. We will meet tomorrow at 2 p.m. Thank you and good night.